For the recitation of Holy Quran, I would like to call Dr. Akbar Raza. Please come on stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Jazakallah. Assalamu alaikum and good morning, everyone. I welcome you all, especially my chief guest, professors, doctors, and the participants. This is Misam Zaidi. Today, I am hosting this event as a moderator. So, we all are here together to celebrate the World Epilepsy Day, as the theme itself called My Epilepsy Journey. Let's start this with the grace and the presence of our professor, Dr. Shahid, to come on the stage. Please welcome for his opening remarks. Thank you, Dr. Misam, Professor Dr. Abdul Malik, honorable guests, students, colleagues, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Dr. Malik is basically a very well-renowned personality in the field of neurology, and his contributions for the Liaquat College of Medicines are immense, especially in terms of the regular promotions of the online teaching sessions and academic activities. And I hope that this momentum will be continue in future as well. As a medical student of sciences, I must say, everyone knows that I am the gastroenterologist, by the way. But as a medical student, I must say that the neurology is one of the most demanding and upcoming profession in the field, or the subspecialty in the field of medicine. And today we are celebrating the Epilepsy Day, which Dr. Malik just told me that it's on the second week of the February. So we are very much in line with the world as well for celebrating it. And I just came to know that this particular event, which inshallah we will cover in next 2 to 3 hours, is also online as well. And not we are getting the benefit from the local speakers, but we will also get the benefit from the international speakers, which Dr. Malik told me that from the different parts, especially from the India. And I will not take much time to waste and I hope that this session will be really beneficial for all of us. And you know, epilepsy is one of the diseases which is very common in the field of neurology, you know. And people are often the physician has a lack of knowledge about the particular disease. So sometimes they miss the diagnosis of this disease very commonly. And the patients are not going to treat appropriately. So I am looking a lot of medical students as well in front of me. So I can easily say that this session is also very much beneficial for them as well. So please concentrate on this for next 2 to 3 hours and get the maximum benefit from this event. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much, Dr. Shahid, for your kind words. As I want to invite our next speaker, before that, I just want to inform you that this CME is named as a hybrid webinar,
which means that we have the guest not only from the LCMD or our college, but we have also invited the global guest from India and other parts of our country. So let's continue. Our esteemed Professor Dr. Abdul Malik, who is the Professor of Neurology and the head of our department, I want to call him on stage to enlighten us and show some important points on the epilepsy classification and the diagnostic challenges which a physician facing daily. Welcome, Dr. Professor Abdul Malik. बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैव दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं आप तमाम जो सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज की CME जितने भी स्पीकर हैं मेरे अलावा बहुत सीनियर हैं और बहुत सीजन्ड हैं और उससे कुछ न कुछ आप लोगों को सीखने का मिलेगा, तो लिहाजा अपनी जो भी 2-3 घंटे की कंसंट्रेशन है वो इस हवाले से रखें ताकि कुछ सवाल कर सकें, कोई बात पूछ सकें तो उसमें हो सकें। ख़ास तौर पे हमारे डॉक्टर फौजिया होंगी, डॉक्टर सादिया बैठी हुई हैं, इसके अलावा डॉक्टर असफंद जो शिफा इंटरनेशनल से हैं वो उन्होंने बाकायदा इसमें फ़र्दर पोस्ट ग्रेजुएशन की है। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन जो कि एशिया पैसिफिक में एक बहुत बड़ा नाम है और वो इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और एपिलेप्सी पे उनका अच्छा खासा काम है। तो इन सब की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, तो लिहाजा मैं आपसे एक तो गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें कि इंटरेक्टिव सेशन हो, कोशिश करें कि आपस में की गुफ्तगू कम से कम ही हो और कोशिश करें कि कुछ सवालात जवाबात एट द एंड ऑफ द सेशन भी हो ताकि हम इस सेशन से प्रॉपरली हो सकें और मुस्तफ़ीद हो सकें। वो तमाम लोग जो यहाँ शिरकत करेंगे उन सबको फ़ीडबैक फॉर्म भी मिल जाएगा ताकि वो अपने फ़ीडबैक मतलब जो स्टूडेंट होंगे उनको भी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल जाएगा ईमेल के थ्रू, और जो डॉक्टर बन चुके हैं उनको PMDC नंबर की बुनियाद पे CME एक्रीडेटेड आवर्स भी मिल जाएंगे। तो लिहाजा जो लिंक है वो हम शेयर भी कर देंगे फ़ीडबैक का ताकि उसको फिल करके तमाम लोग जो हैं उस सर्टिफिकेट के भी हो जाएँ। तो लेट मी स्टार्ट। आज जिसे बताया गया कि सेकंड मंडे है फरवरी का, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो है ऑन द सेकंड मंडे ऑफ फरवरी मनाया जाता है। तो टुडे इज़ द इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। अच्छा, इस साल की जो थीम है वो है माय एपिलेप्सी जर्नी। असल में इफ़ वी कम अक्रॉस द एपिलेप्टिक पेशेंट, तो ये पेशेंट जो हैं मरीज़ तो बहुत सारी बीमारियों के होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, दीगर डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो बीमारी है इसके साथ बहुत सारी मिथ्स जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे स्टिग्मास जुड़े हुए हैं। कोई इसको जादू समझता है, कोई इसको टोना समझता है, कोई इसको मुख्तलिफ़ चीज़ें समझते हैं। बुनियादी तौर पर एपिलेप्सी इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर, इट्स एन प्रॉपर ट्रीटेबल डिसऑर्डर, और इसका जो जर्नी होता है इसके साथ जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे समझ लें कि चैलेंजेस का सामना होता है। कुछ लोग इसकी मुख्तलिफ मिथ्स की वजह से सही इलाज नहीं करवा पाते। तो इस दफ़ा जो इसकी जर्नी है, नंबर एक काबिल इलाज है, ये जादू टोना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मर्ज़ को समझना चाहिए, उसके लिए डॉक्टर को मर्ज़ को समझना चाहिए, उसको ठीक क्लासीफाई करना चाहिए, उसके डायग्नोस्टिक चैलेंजेस के हवाले से होना चाहिए। इसके अलावा तोहमात से बचना चाहिए, स्टिग्मा से, लोगों को क्लैरिटी से बताना चाहिए, और मर्ज़ को यानी मरीज़ को इस बात पर, मालिज का काम है मरीज़ को ये बात बताना कि भाई आपको ये मर्ज़ है और इसके नतीजे में आपको ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए ये चीज़ें, यानी मर्ज़ को कबूल करना भी एक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है। इट्स जस्ट नॉट कि भाई आप बता दें अच्छा भाई ठक करके ये ले, ये दवा ले लें, ये टेस्ट करा लें, जाए, नहीं। प्लस ये है कि दुरुस्त तशख़ीस होनी चाहिए। दुरुस्त तशख़ीस चाहे कोई भी मर्ज़ हो, एपिलेप्सी के मामले में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दफ़ा जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो एटलीस्ट कम अज़ कम विदाउट एनी अगर सीजर 3 साल तो कम अज़ कम उसको चलना होता है, और काबिल ख़रीद अद्वियात का इस्तेमाल। इसके अलावा भरपूर तरीके, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट हो और वो फिर ज़िंदगी को एक यासियत के अंदर, एक डिप्रेशन के अंदर, एक मतलब अपने आप को समझे कि भाई मैं क्यों, ये गुजारने का कोई
तरीका नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से ही इंसानों पर आजमाइशें आती हैं, अल्लाह ताला ही बीमारियां देता है, अल्लाह ताला ही शिफा देता है। हम सब उसका एक जितने भी टूल हैं, ज़रिए हैं, लिहाजा उसकी रज़ा पे राज़ी रहना असल हम सब का काम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, दुरुस्त तशख़ीस के लिए ठीक मुआलिज का इंतखाब करें। तो यह आज के दिन की जो एक थीम है माई एपिलेप्सी जर्नी, तो एज ए डॉक्टर, एज ए बडिंग फिजिशियन, एज ए गोइंग टू बी बिकम अ डॉक्टर, वी शैल नो कि एपिलेप्सी क्या होती है और किस तरीके से तशख़ीस करते हैं। तो आज की जो टॉक की आउटलाइन है उसमें सबसे पहले जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि भाई क्या तमाम सीजर्स जो हैं वो एपिलेप्सी हैं, तमाम जो फिट्स होते हैं वो एपिलेप्टिक हैं, और क्या तमाम एपिलेप्सी में सीजर होते हैं? ये इंटरमिक्स है। एपिलेप्सी असल में है क्या, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि क्या हम इन टर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, और इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू नो बिटवीन सीजर एंड एपिलेप्सी, और रियली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिटवीन द सीजर एंड एपिलेप्सी, क्योंकि अगर दौरे झटके, हर दौरा झटका एपिलेप्सी नहीं होता, और हर एपिलेप्सी के दौरे में दौरे झटके होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो ये है कि ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है क्या। नंबर 1, ये एक ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उसकी एक्सेसिव एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल, एक्सेसिव, हाइपर सिंक्रोनस यानी एक जैसी, और डिस्चार्ज ऑफ द कॉर्टिकल पॉपुलेशन। ये एक सिंपल डेफिनेशन है किसी भी सीजर के होने के लिए। नंबर 1 क्या होगा, उसकी वो एबनॉर्मल होगा। नंबर 2 क्या होगा, एक्सेसिव होगा। नंबर 3 क्या होगा, हाइपर सिंक्रोनस होगा। और नंबर 4 क्या होगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, यानी इसके अलावा वो चीज़, ये सीजर है। अब ये इसमें देखिए, ये नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, जिस तरह हम दिल की पट्टी कराते हैं उसको हम ईसीजी कहते हैं। इससे दिमाग की जो पट्टी होती है, दिमाग की जो रीडिंग होती है उसको ईईजी कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। उसके अंदर ब्रेन के हम सबको मालूम है कि लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है, प्राइटल लोब है, उसके लिहाज से डिस्चार्जेज हैं, उसके लिहाज से मोन्टाचेज लगते हैं। तो एक तो ठीक है कि आप ईजी ना पढ़ें, लेकिन नॉर्मल जो उसकी जो वेव्स हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, जिस मुख्तलिफ वेव्स होती हैं, तो उसके अंदर नॉर्मल के कॉर्टिकल डिस्चार्ज होंगे, और एक हाइपर यानी बहुत ज़्यादा सिंक्रोनस, एक जैसी, और एक्सेसिव न्यूरॉनल डिस्चार्ज, ये इसमें वाज़ेह फ़र्क है। और उसके नतीजे में ये आप इसको सीजर डिक्लेयर कर सकते हैं, एपिलेप्सी डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि वो आगे डेफिनेशन में बताऊंगा। तो इसके मतलब क्या है कि हाइपर सिंक्रोनस है, सडन है, अचानक से होगा जब आप रीडिंग कर रहे होंगे, और एक्सेसिव न्यूरॉनल डिस्चार्ज होगा तो उसको हम सीजर अटैक कह सकते हैं। और ये आराम से दिमाग की जो पट्टी मैं कह रहा हूँ ईजी, उसमें पढ़ा जाता है। एपिलेप्सी की डेफिनेशन क्या है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले सीजर की डेफिनेशन, इसमें क्या, एपिलेप्सी इज अ ब्रेन डिसऑर्डर, नंबर 1। नंबर 2, ऑनगोइंग लायबिलिटी टू रिकरेंट सीजर, यानी अगर रिकरेंट सीजर हो रहा है तो हम उसको एपिलेप्सी डिक्लेयर करेंगे। और कैसे, यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 सीजर्स टू लेबल द पेशेंट एज एपिलेप्टिक 24 आवर्स अपार्ट। अगर 24 आवर अपार्ट में किसी को सीजर हो रहे हैं तो हम उसको एपिलेप्सी डिक्लेयर कर सकते हैं। इट्स ए प्योर क्लिनिकल डायग्नोसिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो हम टेस्ट कराते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक प्रोफाइल कराते हैं, चाहे हम दीगर चीज़ें, वो इसलिए कि कोई और कॉज ना हो, लेकिन उसमें जो सपोर्टिव टेस्ट है वो नो डाउट इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है, ईजी है, वो आपको एक, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो एबनॉर्मल आए, मुमकिन है उस वक्त ना हो रहा हो। फिर वीडियो मॉनिटरिंग ईजी, दीगर चीज़ें होती हैं। तो सीजर जो है अगर होगा, एपिलेप्सी की बात नहीं कर रहा, सीजर होगा तो या तो सिस्टमिक मेटाबॉलिक होगा, और उसकी वजह क्या हो सकती है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, और अगर ब्रेन की वजह से है तो या तो वो प्राइमरी कॉज है, यानी नो कॉज इन द ब्रेन, वो मुमकिन है कि एपिलेप्सी हो, और या सेकेंडरी कॉज है जिसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। तो ब्रेन के अंदर अगर वजह होगी प्राइमरी सेकेंडरी तो वो एपिलेप्टिक सीजर होगा, अदरवाइज वो सीजर बिकॉज ऑफ द ग्लूकोज या दीगर इलेक्ट्रोलाइट या दीगर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की वजह से सीजर हो सकते हैं।
नीड फॉर एपिलेप्सी क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें एपिलेप्सी की जो इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने जो क्लासिफिकेशन बताई है उसकी जो टाइप्स हैं वो कमोबेश 160 के करीब हैं। 160 तो आदमी याद नहीं रख सकता ना, कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट हो, हाफिज कुरान, मतलब कोई भी हो वो नहीं रख सकता। तो उसको सादा अल्फाज में उन्होंने तकसीम कर दिया गया। पहले उसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा, और सिंपल पार्शियल सीजर के कहते थे। अब उन्होंने उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि हम बहुत आसानी से तकसीम कर सकें ये किस किस्म की एपिलेप्सी है। तो क्यों किया गया क्लासिफिकेशन? ताकि यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी हो, हम एक आसानी के साथ तकसीम कर सकें और फिर रिसर्च डिसिप्लिन में काम आ सके, पेशेंट की तशखीस में काम आ सके, और फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग सीजर टाइप इन एसोसिएशन विद अदर कंडीशन, जिसके अंदर पोटेंशियल सीजर ट्रिगर, प्रोग्नोसिस, कोमॉर्बिडिटीज के नतीजे में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस को ठीक तरीके से, कौन सी दवा देनी है, किसको देनी है, कौन सी दवा किस जेंडर में देनी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर क्लासिफिकेशन ठीक नहीं होगी तो वी विल इन मेस। पेशेंट जो है दवा ले रहा होगा और दौरे झटके उसके पड़ रहे होंगे। लिहाजा क्लासिफाई करना मरीज़ को और उसके मुताबिक दवा देना, यानी अगर देखा जाए तो मरीज़ की ठीक तशखीस क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे होगी और उसकी बुनियाद पे ही उसका इलाज होगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप तशखीस गलत करें इलाज ठीक हो जाए। ये है पुरानी क्लासिफिकेशन जो हम करते रहे हैं। वो क्या था? पार्शियल सीजर, मानी लफ्ज़ पार्शियल खुद ये बात बता रहा है कि पार्शियल किसी एक हिस्से में, और एक है जनरलाइज, यानी एक से ज़्यादा हिस्से में, ज़्यादा 2 हिस्से में, 3 हिस्से में, 4 हिस्सों में। ये पहले उसको पहले हम पार्शियल, सिंपल पार्शियल कहते थे या कॉम्प्लेक्स पार्शियल कहते थे। और फिर सिंपल के अंदर भी मोटर मैनिफेस्टेशन होती थी बाज़ औक़ात में, बाज़ में सेंसरी होती थी, बाज़ में ऑटोनॉमिक होती थी, और बाज़ में साइकिक। अब आप एक चीज़ नोट करें, हम अपने माशरे में एपिलेप्सी के मरीज़ को बाज़ औक़ात देखते हैं तो हम सिर्फ हाथ पाँव को अकड़ने को या ज़बान के नीचे, दांतों के नीचे ज़बान आने को, मुंह से झाग निकलने को, और यानी जो प्योरली मोटर मैनिफेस्टेशन, उसी को एपिलेप्सी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो तो जस्ट एक टाइप है, वो जनरलाइज हो सकता है या कॉम्प्लेक्स या उसमें मोटर मैनिफेस्टेशन। तो जो बाकी सेंसरी, ऑटोनॉमिक, साइकिक मैनिफेस्टेशन की जो एपिलेप्सी होती है वो भी तो एपिलेप्सी ही होती है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ठीक क्लासिफाई करना, ठीक हिस्ट्री लेने के उसको लेबल करना बहुत ज़रूरी है। ये पहली थी। अब क्या है? अब उन्होंने पार्शियल को फोकल कह दिया और उस फोकल में 2 तकसीम कर दी। एक अवेयर, होश का लेवल, जिसको पहले सिंपल पार्शियल कहते थे, और एक है इम्पेयर्ड अवेयरनेस, होश के लेवल उसका नहीं होगा, जिसको पहले कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर कहते थे। तो अब क्या है? फोकल सीजर होगा, यानी किसी एक हिस्से में होगा, नंबर 1। नंबर 2, या तो उसका अवेयर होगा यानी कॉन्शियस होगा मरीज, और इम्पेयर्ड अवेयर, उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, होश के लेवल नहीं होगा। अब आप देखें कि बहुत सारी एपिलेप्सी ऐसी होंगी जिसके अंदर मोटर मैनिफेस्टेशन होगी, नॉन मोटर मोटर। अब उन्होंने पहले वाली तकसीम हटा दी, मोटर सेंसरी है, उन्होंने सिंपल मोटर और नॉन मोटर पे मैक्सिमम तकसीम कर दिया। तो इसका मतलब मोटर मैनिफेस्टेशन का मतलब यह है कि हाथ पाँव अकड़ सकते हैं, कोई एक हाथ अकड़ सकता है, कोई एक टांग पाँव हो सकती है, या दांतों के नीचे जबान आ सकती है, बला बला बला। लेकिन इसको बहुत सिंपल करके फोकल या होश में या बेहोश, और होश में भी और बेहोश में भी या तो मोटर ऑनसेट होगा, नॉन मोटर होगा, या फोकल बायलैटरल होगा, टंग बाय, दीगर चीज़ें हो सकती हैं। मोटर में ऑनसेट में ऑटोमेटिज्म में हो सकता है एटोनिक, क्लोनिक, एपिलेप्टिक, स्पैज़म, हाइपरकाइनेटिक, माइक्लोनिक, और जिस किस्म की मोटर मैनिफेस्टेशन होगी वो ये है, या तो ऑटोमेटिज्म होगा, या मसल एटोनिक हो जाएगा, या क्लोनिक होगा, या एपिलेप्टिक स्पैज़म हो जाएगा, या हाइपरकाइनेटिक बहुत ज़्यादा उसकी एक्टिविटी, या माइक्लोनिक और टोनिक। और नॉन मोटर में ऑटोनॉमिक होगा, बिहेवियरल अरेस्ट हो सकता है, कॉग्निटिव, इमोशनल और सेंसरी उसकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात पेशेंट जो हैं अचानक से, ख़ास तौर पे बच्चों में, गुमसुम हो जाते हैं, अनअवेयर टू फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाते हैं, तो वो भी एक एपिलेप्सी है जो थ्रू ईजी और प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री आप डायग्नोस कर सकते हैं।
जनरलाइज के अंदर मोटर और नॉन मोटर एब्सेंस होगा, और इसके अलावा उसके अंदर भी टोनिक, क्लोनिक, क्लोनिक, मायोक्लोनिक और एटोनिक और एपिलेप्टिक स्पैज़म हो सकते हैं। तो दीज आर दी नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्ट। इसको अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज कर लिया जाए तो ये वो स्लाइड है जिसके अंदर फोकल, इम्पेयर्ड, नॉन इम्पेयर्ड, मोटर मैनिफेस्टेशन, फोकल टू बायलैटरल टोनिक क्लोनिक, और जनरलाइज के अंदर मोटर और नॉन मोटर और अननोन ऑनसेट में मोटर हो सकता है और अनक्लासिफाइड होता है। तो सिंपल ये क्लासिफिकेशन है जिसकी बुनियाद पर आप एक मरीज को क्लासिफाई करते हैं कि आया वो मिर्गी का मरीज है या नहीं है, वो सिर्फ सीजर हुआ या नहीं हुआ, और अगर सीजर हुआ है, फिट्स हैं, एपिलेप्टिक है, तो किस किस्म की उसको एपिलेप्सी है। तो पार्शियल जो सीजर होगा जिसको अंदर एक जगह जिसे कहते हैं होगा डिस्चार्ज रिमेन लोकलाइज, वो ब्रेन के दीगर पार्ट को, दीगर कॉर्टिकल को इन्वॉल्व नहीं करेगा, सिंपल उसका फोकस किसी एक हिस्से में होगा। और अगर वो जनरलाइज होगा तो एक के साथ उसका ट्रिगर जो है पूरे ब्रेन में दीगर हिस्सों में भी, दोनों हेमिस्फीयर में भी फैल सकता है। और अगर सेकेंडरी जनरलाइज है यानी एक उसकी प्राइमरी लोकलाइजेशन कहीं और है और उसके साथ उसकी सेकेंडरी है, तो एपिलेप्टिक डिस्चार्ज इनिशियली लोकलाइज एंड देन स्प्रेड टू ट्रिगर टू जनरलाइज सीजर्स, फिर वो पूरे ब्रेन को अपने हिस्से में ले लेगा। अब आ जाएं डायग्नोस्टिक चैलेंजेस पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको यूजुअली इग्नोर कर देते हैं और बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी लेबल कर देते हैं एपिलेप्सी के मरीज़ को कि ये मरीज़ एपिलेप्सी का, और बार जो कि ज़रूरी होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले ये इनकरेक्ट मेडिकल ये बहुत कॉमन है, यानी कि लोग गैर ज़रूरी दवाएं ले रहे होते हैं। Almost 1 out of every 5 patients treated for epilepsy does not really have the diagnosis। और ये मुख्तलिफ रिसर्चेस, मुख्तलिफ यानी पेपर्स में ये बात आया कि 5 में से 1 पेशेंट जो ट्रीटेड एपिलेप्सी होता है उनको यकीनी तौर पर उसका सही डायग्नोसिस एपिलेप्सी का नहीं होता। For good clinical practice in epilepsy, novel and feasible seizure detection technique of ambulatory, यानी अगर ठीक तरीके से करना है तो एक अच्छी प्रॉपर सही डॉक्यूमेंटेड EEG और गुड क्लिनिकल हिस्ट्री मैंडेटरी है। 2 चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, गुड क्लिनिकल हिस्ट्री एंड गुड क्लिनिकल हिस्ट्री एंड देन प्रॉपर EEG जो कि लॉन्ग टर्म भी हो सकती है अगर एक पे नहीं आ रही, प्रॉपर सही हो, ये ना हो कि जस्ट मोन्टाजेस लगाया और आगे पीछे करके उसकी EEG रिकॉर्ड कर लिए। और सेवरल paroxysmal neurological disorder can be confused with epilepsy, including non-epileptic behavior in cognitively impaired individual like transient ischemic attack, delirium, migrainous event, movement and sleep disorder. This happened कि इस तरह की चीज़ों को भी बाद औक़ात हम एपिलेप्टिक सीजर के अंडर लेबल कर लेते हैं और उसको धन एंटी एपिलेप्टिक देना शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ इन ICU सेटिंग स्पेशली, मैं पोस्ट ग्रेजुएट्स को ख़ास तौर पे, और इन जनरल सेटिंग, भाई अगर कोई एक सीजर के साथ है लाजमी नहीं कि वो एपिलेप्सी का मरीज़ होगा, और ख़ास तौर पे इन कंडीशन में जिसमें ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है, अगर डिलीरियस स्टेज में आया है या माइग्रेनस इवेंट है तो प्रॉपर हिस्ट्री के नतीजे में ही उसको लेबल करें। The diagnostic channel consists of correctly interpreting the medical history, characteristic of the episodes, physical, neurological examination, proper using and interpreting supplemental paraclinical tests for distinguish seizure mimics, detecting seizures, classifying seizure and epilepsy और identify underlying cause। तो this is very important कि जो आप हिस्ट्री लेते हैं उसके नतीजे में जो बहुत सारे जो एपिलेप्टिक सीजर्स के तौर पे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो लाजमी नहीं है कि वो एपिलेप्सी हो, तो उनको आप उन सीजर मिमिक्स को भी डायग्नोज करके डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। एज ए डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, ये हमारा काम है कि मरीज़ की थोड़ा टाइम दे के ठीक तशख़ीस करके उसको प्रॉपरली रिजीम पर डालने की कोशिश करें। उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, ठीक है, एक्यूट मैनेजमेंट इज़ मैंडेटरी, उसके अकॉर्डिंगली करने के बाद। तो टेक होम मैसेज क्या है? नंबर 1, ऑल पेशेंट विल करेक्टली क्लासीफाइज, ठीक उसकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी, करेक्टली डायग्नोज करें, और तीसरी, करेक्ट ट्रीटमेंट रिजीम दें, और चौथी जो है ब्रीफ आउट, उस मरीज़ को ब्रीफ करें उसकी मरीज़ का क्या आउटकम है और ख़ास तौर पे उसके ट्रीटमेंट का आउटकम क्या होगा, ताकि हमें पता हो कि हम क्या मरीज़ की जो डॉक्टर से अपने मर्ज़ के बारे में एक्सपेक्टेशन है उसको ठीक तरीके से बता सकते हैं। थैंक यू।
Thank you, Dr. Abdul Malik, for enlightening us that how to classify epilepsy and seizures. The way he busted all the myths that seizures are very common in our society. Are they epilepsy or the epilepsy is called as seizures? Very beautiful speech. So, as we all know, this is hybrid CME webinar. So we have also specialized guests which are available on the Zoom and join us live. So we are very honored to have us today Professor Mohammad Wasil, Professor of Neurology in Aga Khan University Hospital, and he is the President of NARF Foundation Pakistan. Let's welcome Mohammad Wasil, Professor of Neurology, who already has joined us on the Zoom meeting. Then kindly show us and enlighten us on the topic of eye gap in Pakistan and stigma running in epilepsy. जी जी चलाएं ना जी जी First of all, I would like to thank the organizers for organizing this important session related to World Epilepsy Day. Now, my topic is WHO Intersectoral Global Action Plan on Epilepsy and other neurological disorders, and its relevance for epilepsy care in Pakistan. Successful collaboration has arisen in the last many years related to neurological disorders and WHO collaboration, and there are some of the publications related to this collaboration. And optimizing brain health, I think, is a very important topic across the life course. And this was a position paper launched by WHO. And this is a very interesting information and read related to brain health across the globe. Intersectoral Global Action Plan has a vision of the value of brain health, which is protected and promoted across life course, and the neurological disorder should be prevented, it must be diagnosed and treated, and premature mortality and morbidity must be avoided. People affected by neurological disorders and their carers attain the highest possible level of health with equal rights, opportunity, respect, and autonomy. So it has clear goals. The most important goals are to reduce the stigma, impact, and burden of neurological diseases, especially epileptic disorders or epilepsy, including associated mortality, morbidity, and disability, and to improve the quality of life of people with neurological disorders, their carers, and their families. It has guiding principles which is related to primary health coverage and universal health coverage, integrated approach to life across life course, and basically it is based on evidence-based informed policy and practice, and intersectoral action and collaboration, and empowerment and involvement of persons with neurological disorders and their carers with gender equity and human rights. It has a bunch of strategic objectives. The main objective is to raise prioritization and strength of governance, strengthen governance, and to provide effective, timely, and responsive diagnosis, treatment, and care, to implement strategies for promotion and prevention, to foster research and innovation, and to strengthen the public health approach to epilepsy. So, in prioritization, advocacy is the most important aspect, and it also includes policy, plans, and legislation, and financing. In diagnosis, care pathways are important, then medicine, diagnostics, and other healthcare products, health workers' capacity, training, and support, and carer support is important. Then promoting the brain health, especially healthy brain behavior across life course, infection control, prevention of head and spinal trauma, reducing environmental risk, and promotion of optimal brain development in children and adolescents. And we do it by investing in research and data and information systems. And the public health approach is
extremely important, especially related to epilepsy, which is highlighted in this intersectoral global action plan. So access to service for epilepsy, engagement and support for people with epilepsy, and epilepsy as an entry point for the healthcare system. So these are 10 global targets related to World Health Organization Intersectoral Global Action Plan. And out of these targets, advocacy, diagnosis, and training and capacity building, especially in research and public health approach to epilepsy. And that includes advocacy for available and affordable anti-seizure medications, conduct implementation research and dissemination to strengthen epilepsy services, support public education about epilepsy for community health workers and members of community, and lobby policymakers to integrate care for comorbidities in epilepsy treatment. So this is an important document, and an important aspect of this document is collaboration between WHO and non-government organizations. So WHO recognizes 4 groups of non-state actors. NGOs are important, like Neurology Awareness and Research Foundation is a non-governmental organization working to promote neurological research and education and training. Private sector entities, philanthropic foundations, and academic institutions. So these organizations, they work in collaboration under the principles outlined by WHO for these non-state actors to promote brain health and neurological health. And this is the framework for engagement with non-state actors. So the steps taken by WHO are to find and verify relevant information on a non-state actor and to reach a clear understanding of its profile and risk assessment. Formal engagement is important. Official relations of these WHO with these organizations are important, and WHO has enabled non-state actors for global health. For example, for epilepsy, they are collaborating with International League Against Epilepsy, World Federation of Neurology, International Bureau of Epilepsy, Alzheimer's Disease International. These are some of the organizations WHO is collaborating to improve neurological health and neurological care. So other engagement is attendance at meetings and consultations, co-development or contribution to WHO technical products, dissemination of WHO technical products and messaging, and advocacy events, especially Global Health Days. So today we are going to celebrate International World Epilepsy Day, and this is also a part of the WHO action planning for improving neurological care. Official relationship is important, and for WHO, for non-state actors and other organizations which are going to be working with the World Health Organization. Now, this implementation of intersectoral global plan is important, and that was decided by World Health Assembly. The main actions include leadership and advocacy training, production of technical products, country action, research and data, and collaboration. So these are some of the important aspects. Leadership and advocacy is going to be the most important aspect of WHO action plan, especially for epilepsy treatment and management. This is important part of global health agenda. And basically, we want to provide a convening platform for generating and leveraging evidence-based information and best practices to inform multi-sectoral action. It should affect policies, plans, and legislation, and involvement of people with neurological disorders. This is an important aspect of improving neurological care across globe, is to involve people with neurological disorders, patients, their family members, their carers, and patient support organizations. So they should be able to understand and advocate for realization of human rights and conventions, policies, laws, and services based on their needs and preferences, and increase resource allocation for neurological disorders and supporting evidence-based budgeting that minimizes out-of-pocket expenses. So this is an advocacy and policy making which has to be done at a country level or province level to improve neurological care.
WHO has done a lot of work in this area, especially global position papers, so World Mental Health Report, epilepsy has been published by WHO, and this is a very good document. Epilepsy, a public health imperative. There is a brain health position paper. COVID-19. There are many publications, and with non-communicable diseases. So these are some of the publications by WHO targeting improving neurological care across globe. And what are the supporting evidences for the development or policies and plans? So WHO wants to develop or review, update, strengthen, and implement national and subnational policies, and this is a WHO mandate that has to be done by the countries, the ministries of health of countries and provinces, to develop a national policy related to neurological diseases, and it should be as a separate instrument for neurological diseases, and it should be done in consultation with people with neurological disorders, especially their carers and the stakeholders and the neurology community. So this policy making is going to be very important for WHO action plan. Some challenges in this area. I think the major challenge, which is again in Pakistan, is the lack of prioritization of neurological diseases in public health agenda. There's lack of awareness. There's a stigma among policymakers toward neurological disease, especially epilepsy. There's lack of among policymakers and people with conditions and strategies for working together. There's lack of coordination among different sectors related to healthcare, and there are legislations that are discriminatory towards people with neurological disorders. So these are some of the challenges which we have to address. And basically, to address these challenges, we need a strong advocacy, we need collaboration and integration, we need capacity building of the healthcare force, the doctors, the nurses, and the paramedics, and even the family members. And this should be considered an investment, not an expense. And the healthcare system should invest to address these challenges. There are technical products which are available, and these technical products could be used. Some of the WHO guidelines which are available, especially for WHO guidelines for management of infection, cognition, cognitive decline, dementia. So these are some of the WHO guidelines and principles, and technical products are available and should be developed in the countries. WHO has done standards and standard setting products that are not guidelines, but they are very helpful, especially related to Parkinson's diseases and other neurological diseases, and COVID. So these guidelines should be used for future care. Care pathways are important that should be developed by the local societies. Local guidelines like Pakistan Society of Neurology has published epilepsy guidelines throughout Pakistan, and we should look at the WHO essential medication list. Now, most of the anti-epileptic medications are part of WHO essential medications list, and these should be made available to all patients in Pakistan by the government sector hospitals, and government should make sure that these medications are available. We should have a state plan for healthcare worker capacity building, training, and support, and that includes curriculum development and training material, and forums for clinical exchange. And we should develop a plan for carer support, especially the family members of people who have neurological diseases or epileptic disorders. So these are WHO integration that, there are many neurological diseases, and we should understand a cross life course, and healthcare and social system, especially universal health coverage and primary health coverage, should be focusing on these neurological diseases. And WHO has mandated countries to make sure that they are able to address these kind of issues.
Now, epilepsy burden in Pakistan is very high. 65 million epileptics across the globe, but we have 2.4 million in Pakistan, which is 9.99 per 1,000 people. It's more common in children, which is 14.6 per 1,000 children. More than 50,000 deaths per year related to epilepsy. It's more in younger than 30 years of age and more in rural areas. There are a lot of challenges related to epilepsy care in Pakistan. There's lack of awareness among public and misperceptions. Lack of awareness among physicians is a problem. Affordability of medicine, especially in the rural areas, and even availability of medication is an issue. There's lack of neurologists in countries, so there's only one neurologist for 10,000 epileptic patients, and no government support for epilepsy patients and its medication use. So these are some of the challenges. And the important thing in country action is basically a policy dialogue and strategic support. So these are two important aspects for country action. And this is the framework WHO has identified for country action. So there should be joint working teams working with the country office of the World Health Organization and the regional offices working with the ministries of health at the provincial level for improving neurological care. WHO has done some policy briefs and activities, especially related to dementia, and a special initiative for mental health, epilepsy projects, and framework for the service delivery in countries. For mental health, WHO has ensured that universal health coverage should be data collection from almost all centers throughout the Pakistan. So this data collection will be important for future neurological care and epilepsy care in Pakistan. Collaboration is extremely important, especially a collaboration between WHO and NGOs, between NGOs and NGOs and other partners. So Pakistan Society of Neurology is working with Neurology Awareness Foundation and educational institutions like Aga Khan University. And we hope that we will be collecting data from more than 70 centers from Pakistan. We'll be collaborating with them for research. NIH has provided funding for National Health Survey for neurological and psychiatric diseases in Pakistan, which is being done by Aga Khan University. So these are important collaborations for future interventions and future information. And that should work in the form of conferences, projects and initiatives, and consultation and advisory groups. And these collaborations will be important for future neurological care, especially epilepsy care. So other key diseases should be incorporated in this neurological care model and epilepsy care model. Especially mental health is an important issue for epileptic patients. They do develop depression, anxiety, and a lot of social stigma. And it's an important part of non-communicable diseases. And this collaboration should be at a primary healthcare level, because there are only few neurologists in the country. So that cannot provide care to all the epilepsy patients. So this care should be provided at a primary health care at the level of lady health visitors or lady health workers. Medicines should be available at all levels. Diagnostic facilities should be available for epilepsy patients and other neurology patients. And rehabilitation and recovery mechanisms should be in place. And we should also be able to work with public sectors for these patients for employment, social protection, and social care, and law provisions. So these collaborations will be important for future neurological care. This is editorial which we published in Journal of Neurological Sciences, which is a World Health Organization intersectoral global action plan for implications for Asian and African countries. So in conclusion, WHO IGAP is a major step forward for epilepsy care and neurological care across globe, and we should be able to implement this action plan in Pakistan to improve epilepsy care. This is a 10-year strategic plan with yearly benchmarks
and PSN should be collaborating with WHO Pakistan and National Health Services Ministry and even provincial ministries. And we should be focusing on awareness, advocacy, and guidelines, neurology workforce training programs, recruitment. At all DHQ and THQ level, we should have a neurologist. And even if there are no neurologists, we should be able to train primary health physicians or internal medicine doctor to provide optimal care to epilepsy patients. Stroke and epilepsy care are two important areas identified by the World Health Organization. WHO certified stroke centers are going to be important, and epilepsy section in society is going to be very important. And we should be focusing on research, population-based strategies, and research and registries. So at the end, I would like to thank the organizers for providing opportunity for discussion of this important action plan. And I will be glad to take any answers if there are any questions or concerns to this presentation. Thank you very much. The knowledge regarding intersectorial global action plan, which is IGAP in epilepsy. Now, moving forward, we have a very esteemed consultant neurologist here, which joined us from SIUT Karachi. All the participants and doctor, please welcome Dr. Sadia Nishad, consultant neurologist, which joined us from SIUT Karachi, to tell us about evaluation and management of the patient regarding seizures. Assalamualaikum everyone, and a very good morning to the residents, to the medical students, to the doctors, and thank you Dr. Malik for inviting me here. So I am just going to ask her how to go about, is this the way to do it? Alright. So I'm at SIUT, it's an Institute of Neurology and Transplantation with no conflict of interest. I'm going to be moving back and forth from here. So Dr. Malik, I'm actually assistant professor working in the Department of Neurology. We actually established neurology at SIUT back in 2016 with Dr. Mohish Irani. So what the kind of patients I deal with are kind of unique. You don't see those run-of-brain patients. These are patients who are dialysis dependent, who are getting their transplanted. We have about achieved 7,000 live-related renal transplants, the highest in Pakistan, so actually, and everything is provided free. We deal with oncology patients, pediatrics, and urology patients. So this is like a unique cohort of patients that I see. And Dr. Malik asked me to go through the topic of why a patient would keep on having seizure, and I would thank him again because it actually cleared up a lot of my old concepts and made me revise my knowledge what I had gained back in my residency days and the newer things that are coming up. So let's move on. So we're going to talk about the pathophysiology, which Dr. Malik has already done, so I'm just quickly going to revise through that. What are the causes for recurrent and how would we go about managing it? So quickly, everybody knows, you guys are medical students, अब तक तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा कि seizure क्या है. तो हमें actually hyperexcitability होती है, certain neurons which are kind of problematic. They get excitable. There's nothing there to stop them. They're going to intervene and they're going to address the neurons which are on their sides, and they're going to hyperexcite them. And this will then lead to a cascade of neurotransmitters. The ones that are going to stop the epilepsy from happening, the inhibitory ones, is going to be the GABA, and the glutamate gets, you open the door for glutamate, and then hands on, the patient will keep on having seizures. Focal, generalized, Dr. Malik has already gone through it. This is the slide that I was mentioning to you. You guys must have gone through it. Okay, GABA kya kar raha hai? GABA is actually inhibiting it. Remember GABA and glutamate, this is what you need to add. Remember at the time when we prescribe medications. Which year medical students are you guys? 5th year? 4th year? Done your pharmacy?
So your mechanism of actions might be better than mine, right? So you might be knowing or remembering them more than I do. So basically remembering the GABA, glutamate, the sodium channels is the key to addressing these seizures. So I put this slide up because I think there are residents as well sitting here. Do we have residents? Medicine residents? No one? Oh, there you are. Do you deal with status epilepticus? Yeah? Are there any emergency residents? I've seen some stethoscopes around, so I think the stethoscope means that they are residents. The reason I put this up because I get a call from the ICU a lot. जी ये patient को तो seizure हो रहे हैं 2 दिन से हम क्या करें? I'm like, why did you guys not call me immediately? So status is, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं because I'm very bad at definitions. So this is how it goes. Status epilepticus by International League Against Epilepsy defines it as either वो mechanism जिनको seizure को रोकना है वो अपना काम करना छोड़ दें और या वो mechanism जो seizure करवाते हैं उनको इजाज़त मिल जाए go ahead and carry on seizures. पहले कहते थे half an hour तक if somebody has a seizure that's a status, but nowadays they say 5 minutes, you do not reach the baseline, patient baseline में नहीं reach करता, that's status epilepticus. Remember, address it soon, hit hard and hit fast. Otherwise this is not going to go on and this patient is going to get intubated, will develop other complications. So this is another thing. So when I was going through this presentation, making it, I thought about कि क्यों हो रहे हैं seizures? क्या है ये seizure threshold? You, me, and all of these 50 people or 20 people sitting here, हम सब में एक seizure tendency है. Remember, we all have this efficiency, if I say, of having seizure. And why is it that some people have the tendency to have more, and why do some people have it less? हम सब sleep deprived हो सकते हैं, हम सब certain medications इस्तेमाल कर सकते हैं, but why would those particular patients have seizures and why do we do not? वो क्या factors हो सकते हैं? तो इस actually इसे क्या कहलाते हैं? ये actually brain की level of excitability. किसी की excitability बहुत high होती है and they won't have seizure, and somebody who is sleep deprived, has a menstrual cycle, has a migrainous headache, goes under a terrible stress, either home stressors or work stressors, can end up having a seizure. So what are those factors? क्या factors हैं जो run करते हैं कि जी इसका seizure threshold ज़्यादा होगा or the other ones could have a seizure threshold which is lower. So those are the genetics, a current illness, certain lifestyle choices, maybe recreational drug uses, some genetics, again I'm revising it, genetics ongoing. So I left everything blank because I need an active input from you, 4th year medical students and residents, right? Right? So please help me on this. क्या उस causes हो सकती हैं? So primary cause क्या हो सकती है epilepsy की? A louder answer. Anything. I'm not going to be judgmental. I'm not giving you numbers on it. But क्या genetics हो सकते हैं? All right, excellent. So genetic epilepsies. So उसमें होते हैं Rett syndrome, Dravet syndrome, you will go about reading about it. Sometimes genetics की वजह से आपका normal scan भी होता है, but genes play a role and then patient will end up having primary epilepsy. Then what about those epilepsy जिसमें genetic family history involved होती है? That also comes in primary epilepsy. Secondary, मैंने यहाँ पे एक definition डाली है unprovoked seizure की. और आप लोगों को बहुत और लगेगा why is she talking about unprovoked जबकि उन्होंने provoked लिखा हुआ है, इसलिए कि ये मैंने भी आज इसमें I read a continuing magazine epilepsy का 2025 का and they said about this कि unprovoked seizure एक provocative event हो चुका है. Somebody has had a stroke 7 days back or intracranial bleed 7 days back and never had a seizure at that particular time, but later can have a seizure without provocation. That's unprovoked, right? आपके पास एक event already brain में ability develop हो गई है. This patient can end up having a seizure. तो क्या event होगा फिर वो उसको seizure हो गया. अब बहुत सारी times हमसे medicine वाले पूछते हैं कि we are discharging this patient, he's had a stroke or an IC bleed. Do you recommend putting them on anti-epileptic medications? So what answer should I be giving? Yes? No, you will not. No, because you will wait for the event to happen. Yes, there is a bleed in the brain present. Yes, there is a stroke present. But no, you're not going to start on medications.
सही है। तो सेकेंडरी इवेंट्स में ब्रेन की एबनॉर्मेलिटी आ गई, इसमें स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हो गए, इसमें ट्यूमर्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस। वर्किंग इन अ ट्रांसप्लांट एंड न्यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट, कॉमन कॉजेज ऑफ सीजर्स, हाइपोकैल्सीमिया, hypomagnesemia, hyponatremia, right, residents, and uremia. You won't believe it, the kind of things that I actually saw. This young boy, he's going to get transplanted, and he said that मुझे पहला इवेंट हुआ था, झटके पड़े थे और मुझे डॉक्टर ने कहा तुम्हें खून की कमी है। तो खून की कमी का इलाज होता रहा, झटके पड़ते, बट दे डिड नॉट फाइंड आउट व्हाई ही हैड anemia because of renal failure. And sometimes the first evidence would be coming of uremia or renal failure would be as a seizure. So remember, when you're sitting in your clinics, your ERs, make sure you run through those panels of blood testing. And then infections, we got through it. Chronic causes में non-adherence बहुत common है. I put you on a medication, I ask you to come back and ask डॉक्टर साहब वो तुम्हें आपने कहा था 2 हफ्ते के बाद दवाई बंद कर देना, नहीं मैंने कहा था 2 हफ्ते बाद आने को. सो मेक श्योर यू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, पुट इट डाउन. ये नहीं दवाई खानी है, 2 टाइम खानी है, दवाई मैं बंद करूँगी, अगर इसका साइड इफेक्ट आएगा तो कम बैक एंड टॉक टू मी. डू नॉट स्टॉप द मेडिकेशन until unless I tell you of a particular side effect and then you immediately do so. उसके बाद क्या हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. हाँ जी, क्या होंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स? हाँ ओके, स्लीप डेप्रिवेशन, okay, all right, and then stresses, right? What? Sleep deprived, yeah, she talked about it. Excellent. और ऑटोइम्यून पे पहले चले जाते हैं, फिर हम पेन्स की बात करते हैं. ऑटोइम्यून कौन सी कंडीशंस होंगी? कम ऑन गाइस, अब तो पता होगा ऑटोइम्यून तो. SLE, right? Autoimmune encephalitis is coming up. बहुत सारी ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं. पहली प्रेजेंटेशन अगेन सीजर की पड़ती है. जब आप ब्रेन स्कैन कराते हैं, वेस्कुलाइटिस आता है, वर्कअप हुआ तो पता चला they have SLE, Sjogren's and the work. Okay, so psychogenic. I keep on treating the patients on medications. Patient keeps on having seizure. ये क्या हो रहा है भाई? दवाई भी खा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन, क्या बात है? डॉक्टर सादिया, have you taken the history again? You go back and ask them again. What kind of seizures are you having? जिसको आप झटके कह रहे हैं उसमें होता क्या है? जब पता चला तो जी it turns out to be completely different. कोई स्ट्रेस हुआ, वो बेहोश हो गए. ठीक है. अभी recently I saw this 10-year-old boy from Afghanistan and he had nephrotic syndrome, and this guy, the pediatric unit came to me and said कि मैडम इससे तो झटके पड़ रहे हैं, अच्छा देख लेते हैं. उसका creatinine he was about to get into CKD3. And then उसको बाद की पता चला उसे ट्रेमर हो रहे थे. They didn't check the temperature, he was 101. So anything that moves, anything that is a tremor, anything that is behoshi is not seizure. Go back, history. Dr. Malik emphasized upon it, I am emphasizing triple on it. Let's move on. So अब हम बात करते हैं कि drug resistance is another aspect of having recurrent seizures. और drug resistance क्या होती है? So ILE talks about कि आपने एक medication दी, आपने full end दे दी, patient भी बहुत अच्छे बच्चों की तरह, they are taking the medications right on time, once in the morning, one at night, the time you give them बिल्कुल अच्छे से follow कर रहा है. डॉक्टर साहिबा मैं तो दवाई ले रहा हूँ फिर भी मुझे झटके पड़ रहे हैं, अब क्या करेंगी डॉक्टर साहिबा? Add a second medication from another group. You know the groups, the GABAs, the sodium channel blockers, the newer ones which act on a totally different pathway. You do that, the compliance is excellent, the dose is adequate, patient has a seizure. इसको कहते हैं drug resistance epilepsy. और इसमें आप पढ़ लीजिएगा is failure of adequate trials to achieve sustained seizure freedom. अब अगेन causes क्या होती? Causes वही हैं जो हमने पहले टाइम से रीड की थी. Symptomatic epilepsy क्या है? Symptomatic epilepsy वो epilepsy somebody had a stroke. Remember you said to start antiepileptic, not starting it until they have a seizure. That's symptomatic epilepsy. एक ज़माने में उसे remote symptomatic epilepsy कहते थे. Symptom हो गया, एक चीज़ आ गई, seizure बाद में हुआ, पर उसके अंदर बार बार होता रहेगा क्योंकि वो nidus of that abnormality is still present in the brain. So abnormal imaging, right? Which means a stroke or a tumor or a prior vasculitic event, prolonged febrile seizures or a prolonged status epilepticus. Again, refractory में जा सकता है. इसलिए I talk to the residents, hit hard, hit fast for a seizure that occurs. Previous recreational drug reviews,
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैंने डायग्नोज ही सही नहीं किया, मैंने मेडिकेशन ही सही नहीं दी, एंड देन दे end up going into drug resistance and a family history of epilepsy in the first patient. These are things that I picked up from the papers that I read for this CME. So इसकी साइड इफ़ेक्ट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लोगों को? ड्रग रेजिस्टेंस हो रही है, दवाइयाँ खा रहे हैं, so क्या हो सकते हैं? पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है, यस, एंग्जाइटी हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ड्रग्स के. डॉक्टर वासे टॉक्ड अबाउट कि सेकेंडरी कॉजेज़ जो है, आप सिर्फ एपिलेप्सी की बात ना करें, एपिलेप्सी की साइड इफ़ेक्ट्स हो गए वेट गेन से क्या डायबिटीज़ हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, यस, ड्रग्स हैव नोन टू बी डूइंग दैट, दे कैन एंड अप हैविंग अ स्ट्रोक, सो दैट्स अनदर साइड इफ़ेक्ट. वेट गेन हो गया, देन एंड SUDAP. That SUDAP is one of the most notorious and dangerous thing that, you know, as a neurologist you need to be worried about. SUDAP है क्या? It's sudden, unexplained, uneventful death हो जाती है in an epileptic patient. Yeah, so that's seen in drug epilepsy patients, drug resistant patients. So हमने करना क्या है? What can we do? How am I going to approach these patients? What should I do? What should I do? Come on guys, you're sitting in a clinic. आप लोग क्या करोगे? मुझे लगता है रेजिडेंट्स बैठी नहीं है यहाँ पे. हिस्ट्री लोगे? राइट? नहीं लोगे? नहीं लोगे हिस्ट्री? हिस्ट्री लोगी. तो हिस्ट्री में क्या पूछोगी? What are those events? किसी ने विटनेस किया था? Did it start off with something? Did it give you a premonition कि जी something is about to happen? And was there any triggering event? कोई फीवर आया था? वो पूछेंगी. और क्या पूछ सकेंगी? किस तरह का सीजर था? कितनी देर तक लास्ट किया था? Were you confused or not? Post-ictal, did you fall down? Did you have a motor event or you felt sensory? डॉक्टर मालिक ने बहुत डिटेल में बताया है classification, the different types of events that can occur, the different symptoms that can happen. So history and history again. Like last week I saw this guy, he's a transplanted patient on Epivel, and उससे पूछे सीजर हुए जी मेरी हाँ दवाई स्टार्ट हुई है ट्रांसप्लांट से पहले और मैं आता हूँ आपको दिखाने. मैंने कहा बट यू डिडंट कम टू मी फॉर 3 years, आई डोंट नो वेदर यू वर एक्चुअली हैविंग और नॉट, कि अभी दोबारा हो रहे हैं. मैंने कहा अच्छा तुम दवाई तो बहुत अच्छे से खा रहे हो, तुम्हारा वेट भी ठीक है, लिवर फंक्शन भी ठीक है, एपिवॉल. और झटके को जो वो झटके गया था वो नींद में उसको एक स्लीप जर्क आता है, उसको वो झटका बना के somebody put him on medication. उसका MRI कराया. MRI यूजुअली जब हम ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में जाते हैं यू डोंट एक्ट फास्ट, यू जस्ट लुक इनटू एनी फैक्टर, लुक इनटू द ब्रेन MRI, कोई नॉर्मैलिटी तो नहीं, कोई EG करा ली, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन हिम. सो आई हैड टू काउंसल हिम एंड माई नेक्स्ट प्लान इज टू ग्रेजुअली टेपर इट ऑफ एंड गेट इट आउट ऑफ द वे. अच्छा फिर क्या हुआ? हमने एग्जामिन किया. आपके पास वही पेशेंट आ रहा है, आप देखें कि कोई नई इवेंट तो नहीं डेवलप किया, कोई फॉल तो नहीं हो गई, कोई बोन तो नहीं ब्रेक हो गई, कोई फोकल डेफिसिट तो नहीं आ गया विच कैन लीड और चेंज द सीजर पैटर्न. अच्छा नेक्स्ट हम वर्कअप क्या करेंगे? ये लिखा हुआ है, आई नो यू आर रीडिंग इट वेरी वेल. सो ब्लड टेस्टिंग तो पहले कराओगे, CBC से स्टार्ट करना, मेक श्योर यू लुक इनटू द प्लेटलेट्स. फॉर ट्रांसप्लांटेड पेशेंट, फॉर रीनल पेशेंट्स on dialysis, platelets are low. The quantity is okay, the quantity is well, but the quality is bad. Why am I asking for platelets to be looked into? Because the medicine that I will be prescribing, for example, I'm going to go for valproate. Do I give it or not? Agreed? Check karungi na, right? Do I look at creatinine? Yes. Do I look at sodium? Do I look at the factors which will be addressed soon? जैसे अगर सोडियम कम हुआ, ये सही हो गया, do I need to put these patients on medications for long term? नो, बिकॉज आपने एक फैक्टर करेक्ट कर दिया, सोडियम कैल्शियम आपने ठीक कर दिया, दैट्स ओके. फिर क्या कर सकते हैं? देन ड्रग लेवल्स वैल्प्रोवेट के हो सकते हैं, कार्बामेज़ेपिन, फेनाटोइन, एंड 20 EG कर लें. डॉक्टर मालिक ने कहा नॉट इम्पॉर्टेंट EG, बट जिनमें रिकरेंट हो रहे हैं आप देखते हैं कि वाई दे हैविंग रिकरेंसी. 24 आवर वीडियो मॉनिटरिंग, 24 आवर्स आप एम्बुलेटरी EG करा सकते हैं. और रिमेंबर कार्डियक वर्कअप ज़रूर कराना. यंग पेशेंट, सडन डेथ, सडन फॉल, आपने एरिथमियाज मिस कर दी, इवन एल्डरली में हो सकता है, एरिथमियाज मिस कर दिए एंड पीपल लेबल इट एज सीजर, यू आर इन फॉर ट्रबल. MRI, लुक फॉर स्ट्रक्चर एब्नॉर्मैलिटी, स्पेशल MRI, SPECT एंड SPECT. हमारे पास इनके सॉफ्टवेयर्स नहीं है. PET एंड SPECT हमारे पास है, बट वी डोंट हैव PET एंड SPECT सॉफ्टवेयर्स टू लुक इनटू एपिलेप्सी.
ये मैंने आप लोगों के लिए 2 लगाए हुए हैं. दिस इज़ लाइक स्पेशल MRIs हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड टू लुक फॉर पेशेंट्स विद एपिलेप्सी, आइडेंटिफाई द एरियाज विच आर एपिलेप्टोजेनिक. सो द एरियाज विच आर इम्पॉर्टेंट, विच आर एलोक्वेंट, जहाँ से स्पीच आ रही है, वो टारगेट ना हो जाए सर्जरी के बेसिस पे. और मैक के अंदर तो अगर नॉर्मल EEG हुई हो गई, नॉर्मल MRI भी हो गया, मल्टीपल ब्रेन लीजन्स हो गए, फिर भी ये आपको पिक करके बता देगा कि कहाँ से एपिलेप्टिक फोकाई आ रहे हैं. और ये वो ड्रग की लिस्ट है जो आप सबने पढ़ी हुई हैं, बहुत दफ़ा देखी हुई हैं. हमने वैल्पोएट की बात की थी. कार्बामेज़ेपिन रिमेंबर हाइपोनेट्रीमिया कराती है, बहुत नोटोरियस हाइपोनेट्रीमिया. लुक इनटू इट, दे कम बैक टू यू. मेक श्योर आप हर दफ़ा ब्लड टेस्ट ना कराएं. मे बी यू कैन डू इट वंस, मे बी यू आस्क फॉर द सिम्टम्स, कोई सब सिम्टम्स रिलेटेड तो नहीं आ रहे. फिर आप देख लें लेवेटोरेसिटैम. लेवेटोरेसिटैम इज़ नोटोरियस फॉर कॉजिंग डिप्रेशन, ठीक है, एंड एंग्जाइटी, बैड एंग्जाइटी, बैड डिप्रेशन. आस्क देम, यू नो, कि कोई आपको दवाई से रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है. और जब घर भेजें तो उनके घर वालों को बता दें, ये बताते हैं, और साथ में इतना बता दें कि उसकी कंप्लायंस अच्छी रहे. ये ना कह दें वे दवाई लेना ही छोड़ दें. अच्छा, और क्या कर सकते हैं? मैंने सब कुछ कर दिया, दवाई भी अच्छी दे दी. कीटोजेनिक डाइट, वी ऑल टॉक्ड अबाउट इट, वी ऑल नो अबाउट इट. लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट, राइट, दैट्स अनदर वे. ये क्या करती है? ये जो स्टिमुलेंट्स जो होते हैं, जो एक्साइटेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं, उनको कर्ब करती है, और जो इनहिबिटरी होते हैं उनको कहती है जाओ खुले छुट्टी करो, सीजर नहीं होने देती. और लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस है, योगा प्रैक्टिस है, आप स्पिरिचुअल उस पर आ जाएं. टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ. अ जनरल स्लाइड ऑन दिस. एंड ये एक स्पेशल चीज़ें हैं विच इज़ बियॉन्ड मेडिकेशंस. मेरे कोलीग शायद इसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक उन्हीं का है. This is vagus nerve stimulation. You put a wire around the vagus nerve and put a device, and it addresses the area and curb down the seizure tendency. Deep brain stimulation second है, and third वाला खुद पढ़ लेते हैं साथ, responsive neurostimulation device. इसके बारे में even I am going to be reading again. These are the 3 things which have come up. These are the things happening all over the world. ये slide for the residents. ये remember, this is the 3rd time I'm saying hit hard, hit fast, so that ये status में जहाँ जाएँ, और status के आगे refractory status है और उसके ऊपर super refractory है, then that's a point of no return. Trust me, we've been burnt a lot as neurologists, and I am sure I'm talking to all of my neurologic colleagues. यहाँ पे आपने अगर treat कर लिया ना, तो आपके patient की refraction में नहीं जाएगा, वो drug resistance पे नहीं जाएगा, recurrent seizure नहीं होंगे. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट फॉर मेडिकल पर्पस, एजुकेशनल पर्पसेस, बट ये जो ESET ट्रायल है उसमें भी यही डोजेज लिखी हुई हैं. तो आप अपने ICU में, अपने ER में ये लगा लें कि जी ये डोजेज है. इफ़ यू डोंट टेंड टू रिमेंबर इट, तो ये याद रखें कि डायजेपैम और मिडाजोलैम हमारे पास अवेलेबल है, लोराज़ेपैम हमारे पास अवेलेबल नहीं है. फॉस्फेनाटोइन हमारे पास नहीं है, बट वी हैव फेनाटोइन, वी हैव लेवोटिरोसिटैम, वी हैव वेलप्रोइड. और सो एक न्यू अपडेट है, ये 3-4 नई ड्रग्स आई हैं. इनमें से ब्रोवेटोरेसिटैम इज़ अवेलेबल इन कराची एंड इज़ बीइंग यूज्ड बाय मेनी ऑफ माय न्यूरोलॉजी कॉलीग्स. देन सेनोबिमेट है, कैनाबिनॉइड है. कैनाबिनॉइड्स के बारे में आपने पता होगा, इट्स बीन एड्रेस इन मेनी डिफरेंट कंडीशंस यूज्ड फॉर इट. सो समरी क्या करना चाहिए आप लोग बता दें. आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई. ये सीजर है या नहीं है, ये बेहोशी किस लिए हो रही है, सारी बेहोशी, सारे झटके, सारे ट्रेमर्स एपिलेप्सी नहीं है या सीजर नहीं है. सो आस्क एंड यू विल बी आंसर्ड. फिर ड्रग की चॉइस, पूछें उनसे आपने दवाई खाई है और दवाई नहीं खाई तो उसकी क्या वजह है. क्या आप कहते हैं दिन में 1 दफ़ा खा रहे हैं, पैसे नहीं हैं हमारे पास, तो ऐसी ड्रग की चॉइसेस दें जो वो ख़रीद सकें. उनसे पूछें कि मैंने अगर आपको 3 महीने बाद बुलाया तो दवाई बंद नहीं करनी, यू हैव टू टेक द मेडिकेशंस. Address the side effects, tell them soon and ask them to come back to you. इसलिए मैंने रेगुलर फॉलोअप लिखा हुआ है. और साइकोजेनिक एपिलेप्सी अगर ऐसी है तो साइकाइट्रिस्ट से हेल्प ले लें, और ड्राइविंग एंड सेफ्टी 6 मंथ्स के लिए अवॉइड करें. और लास्टली मैंने एक स्लाइड डाली थी अपने जूनियर्स के लिए, स्टॉप एट रेड लाइट, व्हेन यू गो होम से सलाम एंड थैंक यू टू योर पेरेंट्स एंड मेक अ हैबिट ऑफ इट. And open a door for a wheelchair. I am taking care of an elderly patient, my mom, and whenever I go out with her and she's on a wheelchair, nobody opens the door for you. So make sure you do that. This is a lesson I would like my younger generation to keep this around with you. History, history, history and history. पूछें उनसे सोशल स्टेटस क्या चीज़ है which stops them from taking the medication, और क्या चीज़ें हैं जो उनको कहती हैं दवाई नहीं लेनी चाहिए, ये स्टिग्मा है. और लास्टली ऑप्रेसर्स के लिए बात करें. थैंक यू वेरी मच.
Thank you, Dr. Sadia Nishad, for joining us and enlightening us that how important the small questions of the histories are. Before proceeding to the treatment, the evaluation is the mainstay. So these are the words which we should remember for our upcoming journey. There's a big announcement here. I would like to call everyone that please welcome the chair of this session, Professor Dr. Khalid Shar, who is the head of Department Neurology in the JPMC and the Vice President of Pakistan Society of Neurology. Welcome, sir. Moving forward, I would like to say that our new guest speaker who has joined us on the Zoom, Dr. Asfan Yar, who is working as Assistant Consultant Neurologist in Shifa International Hospital, Islamabad. He will present regarding case-based and video-based localization of focal epilepsy. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Asfan Yar. He joined us on the Zoom. Assalamu alaikum everyone, I hope you can hear me. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, sir. Okay. My name is Dr. Asfan Yar. I'm a neurologist working in Shifa International Hospital, Islamabad. So let me just begin by thanking Professor Abdul Malik and all the organizers for arranging such an excellent session and for the preceding talks, which would definitely help me in building my topic. So today I'll be talking about localization in focal epilepsy, and I have very few slides, and they would just be for the residents, very simple things, very basic things, and then I'm going to move on to 5 videos that I have of seizures, and then we're going to work through them and see how to describe the semiology and how best to localize it to different lobes. So just an overview. So for now, we would be talking about localization, and when we talk about localization, why is localization important? So first of all, it is important in patients to determine what kind of MRI you need to get. So if somebody has a suspected temporal lobe epilepsy, then you would need a different kind of protocol for it. And if somebody has a lesion in the, for example, a suspected lesion in the frontal lobe, then you would need a different protocol for the MRI. And when we talk about the semiology and classification of focal seizures based on the semiology, then we need to understand what cortical zone we're talking about. So we would be focusing on the symptomatogenic zone. And symptomatogenic zone basically means that this is the area of the cortex from which the symptoms are produced. It's not necessarily the symptom where the seizure is, the seizure onset zone, and it might not even be the zone which is the most epileptogenic. So it is possible that these seizures start in a non-eloquent cortex and then it spread to an eloquent cortex which produces the symptoms, and because of that we might localize the symptomatogenic zone, but for it is highly likely that it might not just be the only epileptogenic zone. So starting with the frontal lobe seizures, frontal lobe is a large lobe and it has multiple subdivisions. There's the primary motor cortex, the supplementary cortex, the orbitofrontal cortex, then the dorsolateral frontal part, and then the anterior cingulate cortex as well. So this is the this is our frontal lobe. I don't know if you can see my pointer, but let me just fix the. So this one is it. So this is our this area is our frontal lobe. And so if we look at this part, this is the primary motor cortex. So if the seizures arise from here, what do we get? We get brief clonic movements of contralateral limbs. So this is the Jacksonian march that was, the term that was previously used. It starts from one part of the hand. It could be the thumb or it could be one of the other fingers, and then it spreads upwards, or it spreads towards the other parts of the body. It might come into the hand and then the arm and then face and then the rest of the body. The other place that it could start is the supplementary
motor area. This is this one. This is the medial part, and in the supplementary motor area, you've got these entire sequences of motor activities that happen. So if a seizure starts from this area, you can have asymmetric tonic posturing, you can have fencer posturing, and you can have vocalizations as well. So we are going to take a look at the video in a short while, but this is one of those exceptions where the patient may have bilateral manifestations, but may still have retained consciousness, because it would still be a focal seizure, but with bilateral manifestations. And then if the seizure starts somewhere down here in this part, in the orbitofrontal region, then that would lead to kicking, thrashing movements, as well as emotional changes like laughter. So they might present similar to what we get in the hypothalamic regions. And then the dorsolateral frontal seizures. So this is the part we're talking about now, and this is the part where we get the frontal eye fields as well. So then you will get head and eye deviation and simple or complex motor movements, and these are the ones you would encounter mostly at night. And then with anterior cingulate seizures, so this part, so if the seizures arise from this part of the frontal lobe, then what you get? You get emotional outbursts and a lot of these, autonomic symptoms. So you can get tachycardia, hypertension, as well as piloerection and all the autonomic symptoms. So moving on to the temporal lobe seizures. So temporal lobe seizures are mainly divided into two types. So it could be mesial temporal lobe seizures, the one that we encounter more frequently, and these the other ones that are associated with mesial temporal sclerosis, and then the other ones are the lateral temporal lobe seizures. And the mesial temporal lobe seizures, I'm sure everybody is aware of those. So you get this aura. It could be fear or intense kind of emotions, or it could be an epigastric rising sensation. These are followed by manual or oral automatisms and posturing of the arm or leg, and then gaze deviation. With lateral temporal lobe seizures, they're slightly different. It's very important to differentiate between them, because lateral temporal lobe seizures can be caused by tumors also. So even if you get a temporal lobe localization, you still need to take a more close look if it's a lateral temporal lobe seizure, just to exclude D-nets, P-nets, and all those tumors. So these mainly present with auditory hallucinations and language disturbances. So moving on to the parietal lobe seizures. Parietal lobe seizures are many times silent, in the sense that even with parietal lobe seizures, the symptomatogenic zone might not be in the parietal lobe. The epileptogenic zone might be in the parietal lobe, but the symptoms come on when the ictal activity spreads from the parietal lobe to the temporal lobe or the frontal lobe. So it is possible that you can get symptoms pointing towards any of the other lobes. But if the symptoms do arise from the parietal lobe, it could be the somatosensory seizures which present with paresthesias or localized sensory symptoms. You could also get vestibular seizures, including dizziness, body schema seizures, in which there's a distorted limb perception. You feel that your arm is much bigger or much smaller, or thicker or thinner than it actually is. And then it could be parieto-occipital seizures because of spread to the occipital lobe. With this, you get visual and somatosensory disturbances and even sort of complex visual phenomena. So with occipital lobe seizures, again, it could be elementary visual seizures, which just means that there is no complex formed vision. It's just light, simple geometric patterns. And if they become more vivid, if they get hallucinations, then that means they have complex visual seizures. With that, they also can get oculomotor seizures, in which there could be forced eye deviation, and then occipitotemporal seizures, in which you get visual agnosia. They have difficulty in recognizing things, and then even recognizing people and different objects. So just two specific types of seizures which are important for the residents. So you could get hypothalamic seizures, and in these, the most classical ones are gelastic seizures, in which the patient starts laughing without any appropriate context, or they could start crying, which are dicrastic seizures, or it could just be autonomic symptoms. And with insular cortex seizures, you get autonomic symptoms predominantly, but it could also present with laryngeal discomfort, choking sensations, or paresthesias in the face, tongue, or throat. So, so this was just a very basic brief overview. So now let's move on to the videos.
So we're going to start with this video, and these are just 1 minute, 2 minute videos, and then I want you to take a very close look and try and describe the semiology, um, and see what is really happening. So I'm just going to describe it as it happens. So first, when we look at the patient, we can see that he's pressing the button, and patients usually press the button when they get any sort of aura. The next thing we noticed that there was behavioral arrest. He stopped moving his left hand. There was gaze deviation, eye deviation, and head deviation towards the left side. And initially there were clonic movements on the left side, followed by left-sided extension and right arm clonic movements, jerks and flexor posterior. So initially it started off with a focal seizure, and then it moved on to a focal to bilateral tonic-clonic seizure. So where would you localize this? So based on the gaze deviation to the left side. So gaze deviation is not a very good localizing symptom, but it's a very good lateralizing symptom or sign. So even though it won't immediately tell you whether it's coming from the frontal or the occipital, because what temporal, frontal, occipital, all of them can be associated with gaze deviation, but it's a good lateralizing tool if it happens, with a forced gaze deviation. So with such a forced gaze deviation, we know that it's coming from the right side, and the symptoms are suggestive of probably a frontal lobe seizure. So it's a right frontal lobe seizure. So moving on to the next video. So here again, we see that the patient is looking for his button. He wanted to press it, but then he started having these movements. It arose from his sleep. So this is a true seizure, of course, because it arose from his sleep. And then we saw these bicycling, thrashing movements, which are difficult to describe. So these were hyperkinetic seizures. So again, they're coming from the frontal lobe, and this is different from the previous video we saw. So the previous one that we saw was more involving the frontal eye fields, and this one is likely involving the supplementary motor area. So moving on to the next video. So again, the patient is pressing the buzzer, so that means he's having some sort of aura. So he's still aware, so he still has these few seconds of time in between. And then he became a bit confused. And then we can see the manual automatisms and the oral automatisms. So the patient started doing these chewing movements, the lip smacking, and then there are manual automatisms as well. So he on the right side, so he's playing around with his, he's trying to grasp everything. He was playing around with his buttons. And then, but he's still able to follow some commands. He's not able to talk, but he's able to follow some commands. So these sort of automatisms are very typical of the temporal lobe seizures. And then we see that there's forced head deviation, gaze deviation, and then there's flexion of his right arm, followed by extension. And this is so there's extension of the right arm, and initially he had flexion of the left arm. So this is suggestive of a temporal lobe seizure, and this is called the figure of 4. So when you have extension on one side and with the flexion on the other one, then you've got a figure of 4, and it's basically originating from the side opposite the dystonic posturing, the extensor posturing. So it's coming from the left side. So this is another type of seizure. So the patient became confused.
So he didn't press the buzzer, but the staff were informed because he had some sort of autonomic symptoms going on. So he was connected to a monitor, and he had some rhythm disturbance going on, due to which the staff came in, and now he's confused. And now we see that there's right-sided facial deviation. There is tonic stiffening as well, so he's still developing some tonic stiffening. There are some clonic movements going on as well. So predominantly on the right side, there's post right-sided gaze deviation, right-sided head turning, predominantly right-sided clonic movements. And now he has right-sided dystonic posturing, right-sided extension, and with left arm flexion. You can see how he held this up like a fencer. So this is fencer posturing. And now he had leg extension as well. Okay, so this is one last video. So again, the patient was asleep and then he woke up. So he's a bit confused. So with this type of seizure, this is just one of those where it's difficult to localize based on the semiology alone. But so a lot of the times you don't get any a sort of specific sign that can localize it to one or the other lobe. And with this kind of seizure, you do need prolonged video EEGs, and even sometimes you need to get depth electrodes in and then record from there. But in most of the cases where you have focal epilepsy and you're able to record with a high resolution video camera, you are able to detect, at least with some degree of certainty, what the localization or at least what the lateralization is. So even though it's an extensive topic, and you need, because each lobe is a huge part of the brain. So even with parietal lobe, you've got seizures coming in from different parts and with different symptoms. But this was just an overview to tell you that it's important to go into the depth of the semiology and understand what the aura was, how the seizure started, and how it progressed, what each of the symptoms were. There are intricacies to this, and a lot of the times there could be, for example, gaze deviation to the ipsilateral side or contralateral side, and even within some of the seizures, you can get initial head deviation to one side, and then later on you can get head deviation and gaze deviation to the other side. But as a starting point, it's essential that you get a good history and a good video recording along with a good EEG, and then try and localize the symptomatogenic zone based on the video EEG. So that is it. I hope you guys can study this in detail after this, but this would give you a good overview. Okay, thank you so much.
Hello, I can't hear anything. I'm not in a position to hear anything. Dr. Manmohan? जी सर, जी सर। हाँ सुनाई नहीं दे रहा कुछ जरा प्लीज। आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है सर। ओके ओके सर। So should I start, Professor Malik? Yes, yes sir, you start, you share your slide. Okay sir. Hope slide is visible clearly. Malik Sahab, hope slide is visible? Yes sir, it's visible. Okay. Very good afternoon. It's around 12:45 in New Delhi, and I'm sure must be 12:15 in Pakistan. At the outset, I'd like to express my gratitude to my dear colleagues for inviting me for this talk. In particular, I'd like to have big thanks to Professor Abdul Malik, who asked me to give the talk on this very, very interesting topic that I'll be highlighting later. And also grateful to the chair, vice chair, moderator, and dear colleagues. I also heard Dr. Muhammad Wase, and before that, very interesting talk on about the pre-surgical workup and other talks, and with interesting case vignettes were very impressive. Congratulations, Dr. Abdul Malik, once again for organizing this wonderful talk. I'm working in New Delhi, India, and I am currently principal director in a big healthcare group called Max Healthcare Group. And I'm going to speak on, is juvenile myoclonic epilepsy truly benign? Truly benign. So that's the topic. This is my brief introduction. I'll just run through it. With Allah's grace, around 450 publications, more than 100,000 citations, and we have I've written guidelines on epilepsy, which are available on website. And third edition of Puzzling Cases in Stroke is in the pipeline. Wase has contributed. Arslan Ahmed from Islamabad has contributed. And I'd like to invite other colleagues to contribute to this interesting book, which itself says Puzzling Cases in Stroke. These are some of my credentials. I bring greetings from New Delhi. Plan of talk, introduction and historical aspects of GME, prevalence and incidence, clinical characteristics, diagnostics, Indian and international studies, management. Then the answer, is it truly benign? Scientific basis. Because on the one hand, we say it's a benign, but we ask the patient to take treatment lifelong. Is it truly benign? Carry home message. I have around 55 slides, and there will be some cartoons and images. So I'm going to show you a video. I'll stop sharing this and show other video, which I sent to I don't know, I hope it should be visible. Good morning. My name is Dr. Manmohan Melchiratta. Is it visible or not? I am currently the Vice President. I'll share. Sorry, it's not coming. And I am working in the field of neurology. Now it should be audible and visible. My name is Dr. Manmohan Melchiratta. I am currently in the capacity as Vice President of International Bureau for Epilepsy Southeast Asia. I have sent this message, which is being played today world over. For the last more than 40 years, I have been looking after people with epilepsy and their caregivers, how I can do best possible for them.
being from a low-income country, like Pakistan, India, like the stigma, myths about epilepsy, poor education, which Professor Abdul Malik also spoke. huge treatment gap. So we coordinate with the other countries to do what I call intra-regional synergy, so that people with epilepsy of one country know the problem of the other country. Like with Pakistan, inter-regional synergy. Try to do inter-regional synergy. People with epilepsy connect with people of low-income countries, the high-income countries, and learn more about how things go there. So it has been our endeavor to do regular education, advocacy, and do the best possible for people with epilepsy and their caregivers. Thank you so much. Soon we have International Epilepsy Day coming, which is on 10th February, second Monday of February, Today. which happens every year. And let us work together to bring epilepsy out of the shadow and carry on our journey of epilepsy. Wish you all the very best, and I wish the world to be free of epilepsy or well-controlled epilepsy. Thank you. Good morning. My name is... So the message here was, okay, I'll stop the video. I am currently the Vice President of... Okay, so the message here was like you are doing today International Epilepsy Day. It's celebrated world over. One correction I like to make, it's not World Epilepsy Day. It's International Epilepsy Day called IED. Every second Monday of February every year. So now I'll go back to my slides. Yeah. So next slide is, I think I'll not waste time on this. My previous speakers have talked about focal onset, generalized onset, unknown onset. What was earlier said like partial onset, that didn't make sense. So focal onset with secondary generalization, combined generalized and focal unknown epilepsy syndrome like juvenile myoclonic epilepsy. The previous speaker nicely talked about especially about the case from even Afghanistan, like structural, genetic, infectious, metabolic hyponatremia, immune, and unknown. So I'll go to my topic. So idiopathic epileptic syndromes, juvenile myoclonic epilepsy, childhood myoclonic abscences, juvenile myoclonic abscences, generalized tonic-clonic seizure on awakening. This is on Commission on Classification of Terminology of Epilepsies and Epileptic Syndrome. These are evolving. As you saw earlier, 2017 classification, then later classification. Now, I see a lot of younger colleagues in the audience, very attentively listening. Please make notes. Please make notes. This will be very helpful. All the speakers have worked hard to prepare this and pass on the knowledge from book to rather from the bench side to bedside. So one important aspect, Professor Abdul Malik said, not necessary to do EEG and MRI in every case. I'm highlighting history is most important. History is gold standard. History details to be inquired from all possible sources. Personal observation like video capture of the event. Please remember, tell your patient, most of them will come on mobile phone, but video capture of the event is very helpful. Now, another important announcement, there is no substitute for a good history. Again, highlighting personal observation of the seizures can be very rewarding. Carefully selected investigation can be helpful. In your country and my country, we cannot be American-like, American investigative, that get these tests done, come back to me, then I'll start the treatment. So this is one of my patient family who had myoclonic, generalized tonic-clonic, or what Delgado Escuta says, clonic, tonic-clonic seizures with or without abscences. Here, this is the index case, which is male, and two sisters had abscences, fever, febrile seizures, and one had later on generalized tonic-clonic seizures. So this makes a complete, but usually happens in adolescent.
Now, it's a clinical spectrum. This is different from generalized tonic-clonic seizures of idiopathic type. It has EEG changes which are different from generalized tonic-clonic seizures. Here AED, now we don't call it AED, we call it ASM, anti-seizure medicine choice is sodium valproate. No, used to be sodium valproate. Now no more, I intentionally written, now no more sodium valproate. Long-term prognosis is different. Usual clinical features of JME are sudden shock-like jerks involve mainly shoulder and arms. Person may not fall. Myoclonic jerks are usually bilateral symmetrical, sometimes asymmetric like this. Suddenly jerking happen. Sometimes fall may occur if they are in the legs or they are very severe jerking. 8 to 17% may remain pure impulsive patitemal. Average interval between myoclonic jerk and first seizure is 3.3 years. So myoclonic jerks observed prospectively, this may be juvenile myoclonic epilepsy. This I will show in a patient who had on premature awakening jerks. I'll advance this. Look, now observe carefully. It will come towards the end of the video. This is one of our patients. I recorded this in 2010. Now the jerk is coming. Look at this. This was in the arm as well as the shoulder. So it can happen both. The adolescent boy was sitting but didn't fall. Now this is the mother who is holding when the jerks happen. Okay, this may not be. So I'll go to next. Now listen from the person account. Young school boy. अभी कितनी उम्र है? The things fall from the hand. Okay. जब मैं चलता हूँ तो कभी कभी आंखें अंधेरा आता है तो मैं बैठ जाता हूँ फिर मैं ठीक करता हूँ ये So he has abscences, jerks and abscences, two things. और जब दिमाग को कुछ याद करो भूल जाता हूँ और नींद से आती है मुझे और कोई प्रॉब्लम? कभी बड़े दौरे तो नहीं हुए? Please confirm this is audible. फैमिली में किसी को ऐसी? अच्छा, एक करके दिखा लो झटका कैसा लगता है. ओके, अभी हाथ पे फोकस नहीं करिए. Okay, I'll stop the video. It was primarily shoulder region jerks. Onset usually in adolescence, usually 12 to 18 years. I'm entering because Shazia Hassan, I'm admitting in the room. Jans D to 1969. Say almost, you can check 56 years back. What a observation. Great man. Myoclonic jerks on awakening or sleep deprivation, like the previous patient I have shown. Generalized tonic-clonic seizure. I'll request friends to, Saira, thank you so much for muting yourself. Generalized tonic-clonic seizure in 80 to 97% described by Pedersen in 1998. Abscences variable incidence 12 to 54%. Lankman 1994. Febrile seizures in 3 to 5%. So these are the distribution of type of seizures. Now, lucid account of a patient of JME. Thank you, Dr. Ahmad, in the room. Lucid account of a patient of JME under the care of Dr. Dieter Jans. Dieter Jans is from Germany. Now, what that girl described, I was a healthy child until my adolescence. At the age of 15 years, everything used to fall from the hand, like this boy said. Early morning, highlighted, bold, capital. I broke innumerable toothbrushes, glasses, and cups. You will say, how come toothbrushes? There used to be toothbrushes which had the end of a glass. My father hit me over the hands at the time because he thought it was my fault or it was hysterical jerks or I don't want to go to school. Now, but I could do nothing about it. My arms and hands jerked and I dropped everything. We consulted several doctors, but none of them was able to help me because this was till that time not well described.
At the age of 16, I had my first seizure. That means generalized tonic-clonic, in which my tongue was bitten and I had terrible headache. Most of my seizure occurred in the morning or if I had to get up suddenly in the night. Now it's the responsibility of all the people who are in the audience through Zoom or in physical in the auditorium. Whenever patient comes with generalized tonic-clonic seizure, don't forget to ask about the history of abscesses and myoclonic jerks. If you do that, once again, welcome Dr. Ahmed. So it is very important to ask this so that we can tailor the treatment, and treatment is different from standard generalized tonic-clonic seizures. Now, another very senior faculty member, Harpin, approved the description. Juvenile myoclonic epilepsy was first reported in France by Harpin. He described a bright boy aged 13 years who developed upper body jerks that progressed to full seizures 3 months later. He referred to these as myoclonic jerks as commotions epilepticus. Commotion, suddenly jerks happening. Something happened, like we see infantile spasm in children. Now, JME historical aspects are given here. I'll not read everything, but it was Dieter Jans who said epilepsy with impulsive petit mal. We are aware of these names. Dr. Mia Abdur Rahman, welcome. Lennox, Lund, Lundborg, Harpin, and main stands out is Dieter Jans, who described epilepsy with petit mal, impulsive petit mal. Now, this is a well-recognized, well-defined age-related syndrome classified as an idiopathic generalized epilepsy. What is the prevalence of JME? 4 to 11% of all seizures. Very important chunk, don't forget to ask. History of myoclonic jerks in generalized tonic-clonic seizures or in abscesses. Incidence of JME 0.4 to 0.9%. Now, seizure precipitating factors. When we are sitting in the outpatient or in our clinic, it is our responsibility to ask, does it occur on awakening? Does it happen because of sleep deprivation and fatigue, alcohol intake, mental stress, strong emotions, anxiety? When I talk of alcohol, I'm talking of global scenario. I know alcohol is not permitted in certain countries. Menstruation, flashing lights and video display, hyperventilation for EEG, bedside hyperventilation it may evoke abscesses and photosensitivity. Diagnosis, as I said, detailed history is of paramount importance. In a young person present, specifically pointed questioning, you must ask. Again, I'm saying myoclonic jerks is mandatory. EEG, video EEG monitoring is usually diagnostic. Now, large size Indian studies, these are some of my colleagues who have reported, and last is from our group, 2002, clinical expressions and EEG characteristic 103 families, Vijay et al. 183 programs. This was our article in 2002, which appeared in reputed journal Seizure, and we described the clinical spectrum. At that time, I was in GB Pant Hospital, Postgraduate Institute of Medical Research. Now, parameter 103, male to female ratio 1 to 1.9 to 1. Mean age of patient 21.91 years plus minus 7.12. Myoclonic jerks, mean age of onset 14.46, so gap of 7 years. There I said 3.3, but in our cases it was 7.7. Generalized tonic-clonic seizure 15.95. First seizure 14.01. Delay in diagnosis is very common. Underdiagnosis and misdiagnosis is very common, 5.26 years, which is very high. And duration of illness 5.52 years. Now, seizure type, myoclonic jerks 103 out of 103, 100%. Generalized tonic-clonic seizure 75.72%. Abscesses 11.65%.
past history of febrile seizure around 10%. So the rest you can see the combination which was there, myoclonic jerks alone versus in combination. Now seizure type in JME proband, this is the chart we published, myoclonic jerk, generalized tonic-clonic absence, febrile, and myoclonic jerk alone. But the EG was fairly characteristic. In these cases, it's an electroclinical syndrome, thus it's mandatory to get an EEG done. To confirm the diagnosis, you will find polyspike and wave discharges. Now, distribution of myoclonic jerks and provocative measures, premature awakening 73.78%, sleep deprivation around 58%, distribution of myoclonic jerks, arms and shoulder 95%. But look at quite high percentage, 25% in the lower limbs. Now, EEG spectrum, you can see ictal EEG, normal EEG, abnormal EEG in 79%. But if you do sleep deprived, then it's likely to be more abnormal. And 3 Hz spike wave discharge is coincidental, 11.7%. This is the analog. You must be surprised. I wanted to show original. When I was in postgraduate institute GB Pant, you can see here polyspike and wave discharges happening in the first 3 seconds of the graph, which are fairly characteristics of JME. The incidence of febrile seizure was higher in our study, so we discussed that. There was a delay of 5.26 years because most of the patients go to physician. Sir, dora ho gaya, behosh ho gaya, generalized tonic-clonic, phenytoin, phenobarbital. No. One has to ask about myoclonic jerks and absences, and those are not advocated. Now, there is a surprise. In our 103 subjects, 10 subjects were already on phenytoin, clobazam, and carbamazepine. But seizures were very controlled. We didn't change. We did report this. Even it is mentioned if myoclonic jerks are controlled, but generalized tonic-clonic seizures are not controlled. It was in green neurology. You can add phenytoin or carbamazepine. So if patient is well controlled and no side effect, no toxicity, don't change. Genetic factor. The percent of genetic factor has been shown to be higher in this epileptic syndrome than in any other. Family history of epilepsy is positive in around 25% of subjects. This is our look at this one family chart. 5 members. Here JME, round 1, first one. Then JME, this has, and her sister children, 2 children, twin, had febrile seizures or febrile convulsion. So that's very important. So what did we do? Dr. Bhaskar Rao, one of my PG, did the thesis on this with IIT Kanpur of genetic study. Dr. Ganeshan had gone to Delgado Escuta, California, LA visit, and he was working there. When he came to the Kanpur, IIT Kanpur, then we thought we'll do a study of JME subjects and their family members in a university hospital in North India. So this study was conducted at GVPAN. All patients attending the neurology OPD and admitted who had JME were included. We had 50 subjects. Now this study suggested that polymorphism screened for BRD2 and LG14 which serve as a risk factor of JME in Indian population. Our study also suggested that genes associated with development and differentiation of nervous system are ideal candidate. The present study may provide the basis for further survey for BRD2 and LG14 polymorphism in JME and underscore the need for large-scale prospective studies. Now, neuroimaging. Routine neuroimaging is normal. We all know. I know, you know. Our neurologist community knows about it, but the guidance of the International League don't recommend routine neuroimaging studies in patients with JME. But that's what I'm going to now present, that it may show abnormal changes. There have been changes reported in the frontal lobe. There has been cognitive decline. And one I will show interesting case witness in the end, which had certain changes. Now, Indian perspective, not an uncommon epilepsy type in India. Various studies report prevalence as being around 7.7, which I said 7 to 11 in our country. Despite this, there is a considerable delay
in the diagnosis of GME, which we said 5.26 our group said, Vijay et al. And Pangadi et al. Why delay? Why does it happen? The delay in diagnosis GME in India could be attributed variously to the relative unfamiliarity of many practitioners with GME and the failure to elicit a history of myoclonic jerks, which are very commonly neglected by most patients and their families. Indian perspective. GME commonly occurs in the relatives of probands. Mendiratta and Agarwal documented a positive family history of 25.2% in probands among first and second degree relatives, and similarly Vijay reported little higher incidence than us. Now myoclonic jerks were encountered in all. Murthy et al. Described the occurrence of predominantly unilateral myoclonic jerks in 16% of the cases. So it's the observation. Now onwards, you also observe and can have a database. I will be happy to collaborate with colleagues in Pakistan and make a larger database. Now the incidence general tonic-clonic was around 75 to 80%. Mendiratta and Agarwal drew attention to the unusually high incidence of febrile seizures in their cohort. Indian perspective about EEG I have already described, but look at this in the second sentence. Focal, clinical and electrographic features in patient with JME have been reported, which came for review to me. So it is not usually benign. Now most study reported a superiority of valproate in the treatment of JME, now no more. 63% patients showed good control with valproate. After a seizure-free interval of 2 years, they were successfully shifted to even smaller doses. On the other hand, Chakravarti et al. Reported relative resistance to valproate in 16% in Bengali population. These studies highlight a possible difference in the genetic composition of different ethnic groups in India with respect to JME. Now, these are various studies which have been reported. This is what I was saying, Delgado Escuta in 1984. And you can see age of onset, delay in diagnosis. They also had, in US also had delay in diagnosis, prevalence of absences, initial. So this is a slide if any friend requires. I've already sent to Professor Abdul Malik, but if you write to me, I will be happy to send this. My email is mmehndi@hotmail.com @gmail.com. Now, genetics and inheritance, mode of inheritance yet not clear. Polygenic, digenic, monogenic autosomal dominant, monogenic autosomal recessive models have been reported by Ding et al. Now, these are the various chromosomes on which it has been localized. You can see 6p, HLA class 2, GABA RA5, GABA RA3, 15q14, etc. And these are other, this is still evolving. It's a polymorphism. Again, another slide, but I'll not go in detail. Another slide. Now, treatment options, I will take another 3-4 minutes and finish the talk. Valproic acid, yes. Dose, duration, withdrawal. Is it truly benign? Can we stop in what Professor Malik said, 2-3 years? Those are in routine cases of seizure which are not structural. And EEG become normalized. Then also 20% recurrence charges. Phenobarbital and Primidone. What is the status of phenytoin and carbamazepine? As I said, our 10 subjects were well controlled, so we didn't change. Neurades like lamotrigine, topiramate, levetiracetam, zonisamide, and also even brivaracetam. Now we have a preference of starting levetiracetam. Lamotrigine is a good drug, but can paradoxically increase myoclonic jerks. Now this video won't run, but you can see I took the video with consent. He's on valproate. Look at this. He has lost hair. He has gained so much of weight. And his seizures are not controlled. So this is the time to change from valproate. I changed to levetiracetam, took the video with kind permission and shifted to the what we call international proprietary name LEV, levetiracetam. Now, valproate used to be the drug of choice, effective as monotherapy. Adolescent don't give. Reproductive age group don't give. Don't give to women. We can try in men who are not in adolescent group, but telling them about the weight gain as well as the loss of hair and other things.
controls all types of, as it was said, as broad spectrum. Similarly now, levetiracetam is the broad spectrum. Don't undertreat. Average dose is 20 to 30 milligram per kilogram body weight for valproate as well as levetiracetam. When ASM are used in combination, doses need to be increased. Lamotrigine is the next most preferred, I said. Ideal for patients who cannot tolerate the adverse effect of valproate, especially in men. As I said, weight gain, tremor, hair loss. The boy had all three. European expert opinion study showed lamotrigine was first line choice for GME in adolescent, but now is shifted to levetiracetam. Now, levetiracetam received FDA approval for GME in 2006. Levetiracetam adjunctive therapy reduces all seizure type, so it's a good drug. Absence is not controlled, ethosuximide and clobazam, clonazepam, if generalized tonic-clonic not well controlled. Topiramate and zonisamide, which are sodium channel inhibitor, can also be helpful. Phenytoin carbamazepine may markedly increase the frequency of myoclonic jerks. But friends, read in the parenthesis. Is written, but not in all. That was in our study, 10 subjects we reported. Vigabatrin, gabapentin may increase absence seizure and myoclonics and hardly are ever used these days. Carbamazepine, tiagaban, vigabatrin may precipitate absence status epilepticus. So avoid. And now newer drugs are coming like Parampanel is available in our country. Cenobamate is being made available in our country. Let us see how the future comes. Now, treatment options in GME, these are written in various studies, were like VPA, LTG, TPM. You must know this. If you are going to be neurologist, these are international proprietary names. Phenytoin and carbamazepine better for GTCS. If seizure myoclonic jerks are not controlled or generalized tonic-clonic are not controlled, you can add this. Now, prognosis, seizures are well controlled with medication. 86% get controlled with valproate alone, if can be given, or with levetiracetam. Now, important, anti-seizure medicine usually to be continued lifelong, not only to be given for 2 years or 3 years. So, how is it benign? Sir Manmohan, we are due to time constraint running out of time. Just one slide, 1 or 2 slides. I'll just jump. Okay, neuroimaging can show abnormality. Look at this. Basal ganglia calcification and had classical GME. That's why I'm saying it may not be benign always. Is GME truly benign? I give the evidence here. Is it truly benign? Again, like in most cases, treatment is to be taken lifelong. These findings are increasingly casting doubts on the popular notion that GME is a benign epilepsy. Now, carry home message. GME is an important form of generalized epilepsy. It is still under-recognized, under-diagnosed or misdiagnosed. Treatment needs to be taken lifelong. Levetiracetam is the newer drug, valproate to be avoided to avoid neural tube defect. More and more neuropsychiatric and neuroimaging abnormalities are being recognized, thus no more a benign condition. Thank you very much for the kind attention, and I'm sorry for exceeding the time. My apologies, dear, for exceeding the time by a minute or so. My apologies. You are not audible, sir. Sir, you are not audible. Sir, am I audible now? Better. Yes, sir. Thank you so much, Sir Mohan, for joining us from New Delhi, taking time from your busy schedule. Before proceeding forward, all of the participant doctors, students sitting over here, I request you all kindly put out your mobile phone, and you have provided a feedback form on your Gmail. If you didn't fill yet, the certification wasn't provided to you in an e-certificate form. So it just takes 10 seconds to fill your form if you want to take a part of this ceremony or fulfill this session. Okay, now let's proceed forward. We have joined another special guest, Dr. Fauzia Siddiqui.
She is a consultant neurologist and the president of Epilepsy Foundation. All the participants and doctors, please welcome Dr. Fawzia Siddiqui to come on stage with your round of applause. She will provide us about alternative therapies, how effective they are, or how effective the diet is. So please come on stage, Dr. Fawzia Siddiqui. Assalamu alaikum, everybody. How are you all today? एपिलेप्सी का सुनते सुनते सर चकरा गया? अभी तक चकरा रहा है या नहीं चकरा रहा? राइट? दवाइयों के बारे में सुना? मेजर दवाइयाँ कौन कौन? Does everyone here know what epilepsy is? So far you've figured out what epilepsy is? Have you all figured out how to treat epilepsy? Show me how many of you know how to treat epilepsy. हाँ दिखाओ, हाथ दिखाओ यार, सो रहे हो क्या? We have one person here. सुबह से अब तक अभी तक पेशेंट को ठीक करना नहीं आया, तो चलो कैंप पे ना सिखाते हैं तुम्हें. सही? अच्छा सुनो, there's my thing and how do I change the slides? Okay, found it. अच्छा, so we are going to be talking about. यहाँ करूँगी, वहाँ करूँगी, यहाँ करूँगी. नहीं क्या हुआ? अच्छा अब आ रहा है, अब चल गया. So we're going to be talking about alternate therapies. यानी आप लोगों ने मेडिसिन्स का सुन लिया. मेडिसिन्स में जो है मेन मेडिसिन्स एंटी सीजर ड्रग्स होती हैं जो सीजर्स को रोकती हैं, राइट? उसमें उन मेडिसिन्स में आपने नाम सुना है, वेलप्रोएट का भी सुना है, आपने सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का भी सुना है, आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी सुना है, लेविटेरासिटैम भी सुना है, ब्रिवेरासिटैम भी सुना है, आपने कार्बामेज़ेपिन, ऑक्सकार्बाजेपिन, ये सब नाम सुने, राइट? ये सारी दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं. लेकिन क्या गोलियों के अलावा भी कुछ किया जा सकता है एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट के लिए? यस. क्या किया जा सकता है? Avoid triggers. What are the triggers? Flickering lights. और ये है ना, ये लगी हुई, यकीन जानो इससे तो मुझे कुछ होने लग गया, मेरा आधा सर घूमना शुरू हो गया. So लिटरली आधा घूम रहा है, क्योंकि ये आधी चल रही है. अगर ये पूरी चल रही होती तो, बट द थिंग इज कि यस, अवॉइड फ्लिकरिंग लाइट्स. तो ये जो आजकल शादियों में जो ये डिस्को और ये लगाते हैं ना, नॉट गुड फॉर एपिलेप्सी पेशेंट्स, नॉट गुड फॉर माइग्रेन पेशेंट्स. और वो जो ढोल की ढब ढब ये जो होती है ना बड़ी जोर की, और साथ में अब आजकल तो फायरिंग करते हैं कि मेरे ख्याल से हर किसी का ही दिल लरस जाना शुरू हो जाए. So these things are not good for general population and absolutely poison for people with migraine and epilepsy, right? Okay, avoiding triggers के अलावा क्या कर सकते हैं? भाई दवाई से ठीक नहीं हो रहा मरीज, तो आप क्या करते हो? डाइट में क्या करोगे? कीटो डाइट करोगे, राइट? और घर बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो, ना चलना ना फिरना, इतनी सारी फैट के साथ क्या होना है? एडम नहीं है, दूसरा नाम है, लेकिन you're close, good. अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी you know. So okay, so let's see if we can move this. ये फूल जो है ना, लगता है हमारे साथ चिपक गए. There we go. Okay. So 70% of patients with epilepsy are very much treatable, as you all know. ये सारे स्टेटिस्टिक्स सब चीज़ जो है आप लोगों ने देखी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि epilepsy management goes way beyond
just medications. Anyone जिसको आप एक chronic disease का आपने उसको कहना है कि ये है, आपने 2 साल तक यानी उसको दौरा पड़ा है, उसको अब ये एक खौफ है कि वो कहीं किसी के सामने अगर हुआ तो सबसे बड़ा हमारे माशरे में क्या खौफ होता है, सबसे पहला क्या ख्याल होता है? एनीबडी? जिन चढ़ गया। अच्छा, ये कहीं ये ना हो कि हम इसकी मदद करें और ये जिन इसमें से उतर के हमारे ऊपर आ जाए। ये कितने लोगों ने सोचा होगा? जो ये समझता है वो ये सोचता भी होगा ना, तो उससे कितना ज्यादा खौफ होता है, राइट? आप लोग कभी मुल्तान गए यहाँ में से कोई? जकरिया साहब के उस पे गए हैं मज़ार पे? तो अगर आप वहाँ पे जाते ना, या अच्छा इंटीरियर में गए हैं, सेवन शरीफ के पीछे देखा है, तो वहाँ पे जंजीरों से बांधे हुए होते हैं ना, लोगों को बांधा हुआ होता है जंजीरों से, डोरियों से, वो पीपल का दरख्त होता है उसके नीचे। मैं अभी गई थी तो वहाँ पे शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह का, और वहाँ पे ना मैंने देखा तो मैंने खुलवाया, ये क्या सारा हुजूम जमा हो गया, ये हो गया। बेचारे को सीजर्स आते थे, और चूंकि वो रात को आते थे, नॉकटर्नल थे, और उसको पता है, मतलब मुझे याद वो यूं आया कि अभी आपने 1 घंटा तकरीबन सुना है ना JME, उस बेचारे को भी JME था, जिसको बहुत सारे डॉक्टर्स बेनाइन भी कह रहे होते, और बेचारे को रोज रात को वहां बांध दिया जाता था कि सुबह उठ के इसके ऊपर वो पड़ता है, तो वो जब जिन उतर जाए तो फिर उसको वापस लेके आएंगे। सो दिस रियली हैपन्स। सो epilepsy management beyond the pills, there is a big thing जिसमें दम, दुरूद and exorcism हो रही होती है। जिनको उतारा जाता है, बहुत तरीकों से उतारा जाता है, धुनियाँ दी जाती हैं, आंखों में काली मिर्चें डालती हैं, मेरे पास आई हैं भाई, एंड जिस्म को जलाया जाता है कि वो जिन को निकाला जा रहा है। और ये यही नहीं है, about 68, this is more than 50% of people in Europe go to an exorcist at some point in their life. So it is not just पोप के पास, वेटिकन में, इटली में तो बहुत ज़्यादा है, सब जा रहे होते हैं पोप के पास कि ये हमारा जिन निकाल दे, हमारे डीमंस निकाल दे, हमारा जिसको गुस्सा आ रहा है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसको वो है, सब जा रहे होते इसके लिए। So बट व्हाट इज इट दैट वी रियली नीड टू डू? तो फिर अगर ये गोलियां काम नहीं की तो आपने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब कुछ करना है। मुझे स्पेसिफिक 3 चीज़ों का कहा गया था, बिकॉज 15 मिनट्स थे, 5 मिनट्स ईच पे, के डाइट के ऊपर कि डज इट रियली वर्क और नॉट। एंड एक चीज़ होती है जिसको कि यहाँ पे कहते हैं भंग, मैरिजुआना, CBD, कैनबिस, राइट? इसका रोल एपिलेप्सी में क्या है, एंड डज इट रियली वर्क? एंड फिर ये डिवाइसेस लगाते हैं, उसके बाद सर्जरी है। सर्जरी इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉक, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट विल डू। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज लाइक द कीटोजेनिक डाइट, द CBD ऑयल, VNS, DBS। VNS का क्या मतलब है? एनीबडी नोज व्हाट अ VNS इज? Vagus nerve stimulator, right? And DBS, deep brain stimulator, right? And then it's epilepsy surgery. Those are the things we can do as doctors, right? We don't do exorcism. हम भी exorcism करते हैं। अगर कोई आया है और कह रहा है कि जिन है, मेरे पास आते हैं पेशेंट्स कि हमें फला आमिल ने भेजा है कि ये डॉक्टर हैं, लेकिन ये जिन जो है ये बहुत सख्त किस्म का जिन है और मेरे से पूरा नहीं उतर रहा, तो आप डॉक्टर से इसका चेकअप करवाएं। उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर क्या आपको जिन उतारने आते हैं? मैंने कहा जो तुम्हारा वाला जिन है हम पहले EEG करके देखते हैं, उसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी थी। मैंने कहा तुम्हारा वाला जिन हम 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। पहली चीज ये कि गोलियों से। मतलब गोलियों से कैसे उतरेगा जिन? गोलियों से तो बीमारी ठीक होती है। अब बताओ गोलियों से जिन कैसे उतरेगा?
वो वाली गोली नहीं, वो वाली गोली से तो ये भी खत्म हो जाएगा, जिन तो उतरे दवाइयों से आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, थैंक यू फॉर द करेक्शन। तो फिर ओके, तो फिर दवाइयों से बताओ कैसे जिन उतरेगा। उसने बहुत मासूमियत से उसने पूछा, एंड दिस इज नॉट जस्ट वन टाइम, अभी फिर हमारा कैंप हो रहा है तो उसमें देखना एक आध ज़रूर आता है। और जब हम यहाँ गुलशन में लगाते हैं तो फैज़ान मदीना से तो बहुत पेशेंट्स रेफ़र करते हैं, लेकिन वो तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बट दैट्स अनदर टॉक फॉर अनदर टाइम। बट व्हाट आई सेड, मैंने उससे कहा कि देखो ये जो हम इन जिनों को उतारने के लिए और ये दौरों को ख़त्म करने के लिए जो दवाई देते हैं वो इतनी कड़वी और ऐसी होती है, खून में जाती है ना। अब बताओ तुम्हारा जिन कहाँ है? हाँ, वो खून में गर्दिश कर रहा है, खून में गर्दिश कर रहा है ना, ये दवाई भी खून में गर्दिश करेगी। इतनी कड़वी होती है कि उसको इतनी बुरी लगती है कि वो निकल जाती है। उसने कहा कि बात तो सही है, मेक सेंस, ठीक है, आई विल ट्राई इट, एटलीस्ट मुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। मैंने कहा दूसरे, ना तुम्हें कोई धूनी लेनी है ना तुम्हें कुछ और करना है। अगर इससे नहीं मानता और हमारे टेस्ट में नजर आता है कि वो दिमाग में यहाँ बैठा हुआ है कहीं, ही हैड टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, तो लाइक राइट हियर, तो मैंने कहा कि हम इसको थोड़ा सा वो करके हम ऑपरेट करके निकाल देंगे उसको। वो अगर ऑपरेट भी नहीं करना, तुमने कुछ कट नहीं करवाना, तुम उसे खोल के उसको जला देंगे, बुजुम कर देंगे, लेजर कर देंगे। उसने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, फाइन। वो ट्रीटमेंट की तरफ आ गया। वंस वो आ गया, उसने मेडिसिन ली, ही फेल्ट बेटर, उसके फिट्स बेहतर हुए। स्लोली उसको काउंसल किया कि देखो ये ट्रीटेबल कंडीशन होती है और ये इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, आप उसको नाम जो भी दे लो। सो यू डोंट जस्ट अटैक अ पर्सन्स बिलीफ, क्योंकि ये बिलीफ जो होते हैं ये फिक्स्ड फर्म डिल्यूजन्स की तरह होते हैं। आपने अगर उसको अटैक किया ना, वो डिफेंसिव हो जाएगा। सो प्ले अलोंग एंड देन गो फॉरवर्ड। तो कभी आप देखेंगे डॉक्टर फौजिया का कोई मरीज आपके पास आया है और ये कि वो जिनकी ट्रीटमेंट करा रहा है, तो प्लीज बेयर विद इट and we move forward, right? Okay, let's move forward. So what do we have other than conventional? We've talked about the vagus nerve stimulator right here, and then the cannabidiol therapy, and then the अच्छा, DBS। और ये एक चीज और जो मैं आपको बताऊंगी, something that I am very fascinated about, and that is the RNS. This RNS is like वो आपने सुना होगा ना, सर में चिप लगा देना, कोई आया होगा किसी ने, तो दिस इज लाइक दैट। सो इलॉन मस्क का जो वो है ना, तो या दिस इज अ लिटिल लेस एडवांस देन दैट ड्यूरालिंक, बट नो दिस इज प्रिटी फैसिनेटिंग। सो आई विल शो यू अ बिट अबाउट दैट इफ टाइम परमिट्स। एंड दिस इज द DBS जो ऊपर जाता है, VNS नीचे आता है। आई विल शो यू ऑल ऑफ दीज, and these are the main ones that I would want to talk about. So the diet, सबसे पहले diet. Now let me tell you something about ketogenic diet. So in 1928 there was a person known as Jasper and his disciple, a neurosurgeon. Jasper was a psychiatrist and Penfield was a neurosurgeon. I will, if we have time, end my talk with a video of 1928 of Professor Penfield. But so Jasper का बेटा था, who was mentally retarded and had intractable seizures. उसने उसी बेटे के ऊपर इतने एक्सपेरिमेंट्स किए ना, उसने craniotomy करके उसके occipital lobe, so that's how he invented the first EEG tracing and the alpha rhythms, because उसने occipital पे किया था और उस पे उसने वो देखा कि नॉर्मल आइज क्लोज में जब सीजर नहीं हो रहा होता तो ये होता है। और वो बहरहाल, तो वो एक दफ़ा संडे सरमन पे गया, उसमें गॉस्पेल ऑफ लूक पे सरमन हो रहा था, एंड जीसस वाज द मसीहा। हमें सबको पता है कि मसीहा थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जो था वो लोगों को शिफा देना था, मसीहाई थी, राइट? वो हाथ फेरते थे, वो ठीक हो जाते थे हर किस्म का मरीज। तो वो सारा वो एक्सप्लेन कर रहा था प्रीस्ट। तो उसने कहा कि एंड व्हेन द एपिलेप्टिक केम, व्हेन द पर्सन विद द सीजर्स एंड डीमंस केम, जीसस टोल्ड देम टू फास्ट फॉर 3 days, कि 3 दिन का रोजा रखो।
उसके बाद लो एंड बीहोल्ड यू विल बी क्योर्ड। तो उसको बड़ी ये हुई कि सारी बीमारियां तो यूं ही हाथ फेर के ठीक। इसमें सीजर में उसने फास्टिंग 3 दिन की फास्टिंग क्यों करवाई उन्होंने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो जब वो फास्टिंग का पूछा तो उसने क्या किया, उसने स्टडी किया कि फास्टिंग में क्या होता है, जब आप खाना पीना छोड़ देते हैं तो क्या होता है। एनीबडी? जब आपका ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाता है तो फिर कहाँ से एनर्जी आती है? फैट से आती है, और फैट्स का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? कीटोन बॉडीज, राइट? तो उसने कहा कि मैं भी अपने बेटे के ऊपर ये आजमाता हूँ। सो उसने क्या किया, उसके सारे कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिए, सिर्फ फैट्स पे रखा और प्रोटीन्स पे, एंड कीटो डाइट एक तरह से। उससे कीटोसिस स्टार्ट हुई। जैसे कीटोसिस स्टार्ट हुई, यू नो व्हाट हैपेंड, उसके सीजर्स खत्म हो गए, कम हो गए, 60% रिडक्शन हो गई सीजर्स की। ये वो ज़माना है जब ब्रोमाइड वगैरह जैसी चीज़ें ट्राई करी जा रही थी, एनफिनोबार्बिटोन आई थी। तो सो दैट इज व्हाट, सो इट्स अ वेरी हाई फैट, ज़ीरो कार्ब्स, कीटोजेनिक डाइट इज ज़ीरो कार्ब्स। अब सोचो रोटी अनाज के बगैर कोई जिंदा कैसे रहेगा? तो ये इसलिए बच्चों में तो हो जाती है जिनके अभी मुंह पे लगी नहीं है रोटी वगैरह। हम लोग तो ब्रेड वगैरह के बगैर नहीं कर पाएंगे, राइट? So this is, so is it effective for refractory seizures, seizures that medicine से ठीक नहीं हो रहे? Yes, it does reduce the seizures. How effective it is? 50 to 70% of seizure reduction just by the diet. It is difficult to adhere to. It is, so what does it do? How does it work? So it alters the brain metabolism, inducing ketosis. And what does ketosis do? Brain में जो stimulant है, जो stimulating आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, वो कौन सा है? ग्लूटामेट है। और इनहिबिटिंग कौन सा है? गाबा है। तो ये ग्लूटामेट को कम करता है, गाबा को बढ़ा देता है, कीटोसिस। उससे क्या होता है? सीजर्स कम हो जाते हैं। सिंपल इज ऑल दैट, दैट्स जस्ट टू शो के। लेकिन बड़े लोगों में ज़रा मुश्किल होता है, तो एक मॉडिफाइड एटकिंस डाइट किया जिसमें थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट्स अलाउ करते हैं। ये 40 to 50% रिडक्शन कर लेता है, प्रॉपर तरीके से एडहियर किया जाए तो। ग्लाइसीमिक इंडेक्स, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट ऑल्सो हेल्प्स बिकॉज इट हेल्प्स यू रिड्यूस वेट, पेट को कम करता है, एंड उससे और फैट की मेटाबोलाइजेशन को इंक्रीज करता है, उससे अगेन सेम यही इफेक्ट आता है। सो दैट इज ऑल अबाउट डाइट एंड दैट इज द इफेक्टिवनेस। देन देयर आर बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थेरेपीज, हिप्नोसिस एंड योगा एंड कामिंग डाउन। बहुत बड़ा स्ट्रेस का, सीजर्स का ट्रिगर क्या है? स्ट्रेस। So if you can just calm down, take a deep breath and not get all stressed about everything, seizure frequency itself will decrease, and it's coming from the mind. So if you can just control your mind to just relax, क्या है? Hyperstimulation है ना? If you can control your mind and have it not get stimulated so much, that will help too, right? Okay? वेगस नर्व स्टिम्युलेटर, व्हाट इज दिस? वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पेशेंट्स पूछते हैं, मैं कहती हूँ कि ये यहाँ पे लगाते हैं, गर्दन में शहरक भी गुजर रही है, वो यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से सीजर होता है, वो सेंस कर लेता है कि होने वाला है, वो इश्वाएं भेजता है और उससे बंद हो जाता है। पेस मेकर की तरह यहाँ पे लगता है, लेफ्ट साइड पे लगता है, राइट साइड पे नहीं लगता है। एनाटमी वाले मुझे बताएं क्यों? Why do we plant the vagus nerve, the stimulator, to stop seizures in the left vagus nerve and not in the right vagus nerve? Anybody? Do you know the function of the two vagus nerves? What is the left vagus nerve function? What is it? Is it afferent or efferent? Left vagus nerve is afferent, it goes to the brain. Right vagus nerve? Efferent.
तो आप स्टिम्युलेट यहाँ पे कर रहे हैं और आपने ब्रेन में रोकना है, तो आप अगर राइट पे करेंगे तो कहाँ जाएंगे इम्पल्सेस? यस, गॉट इट? So that's why it's on this side. And the other thing is it's just easier to plant because अल्लाह ताला ने ये जगह इतनी खाली रखी हुई है यहाँ पे पेसमेकर्स वगैरह लगाने के लिए. I guess अल्लाह को पता था कि ये जगह जो है ना, just so easy to put in here. Anyway, that's the vagus nerve. Now the RNS, the responsive neurostimulation. हम figure out करते हैं कि seizure कहाँ पे है. The system is implanted in the brain and monitors brain activity. When abnormal electrical activity, same चीज़ है, only thing is ये vagus nerve पे है, तो इसलिए इसकी efficacy जो है vagus nerve की वो 30 to 50% है. वो seizure reduction करती है, complete cure नहीं करती. RNS जो है वो 50 to 60% तक seizures को रोक लेता है, brain के अंदर होता है तो ज़्यादा अच्छा sensitively रोकता है और ये करता है. Let me show you. So 67% जो स्टडी हुई है इस पे, 67% decrease of seizures in 1 year, 75 in 2 years and 82% in 3 years and increasing. 3 years की ये स्टडी थी. So the RNS is something that is probably going to be the next thing for epilepsy treatment. RNS versus VNS. VNS में ब्रेन नहीं खुल रहा, RNS में ब्रेन खुल रहा है. VNS जो है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी RNS है, राइट? एंड RNS में जो है आप उसमें इलेक्ट्रोड्स जो के अंदर होते हैं, आप ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. इसमें VNS में नहीं कर सकते बिकॉज वो ब्रेन में जा ही नहीं रहा. डीप ब्रेन स्टिम्युलेटर इज FDA approved both for epilepsy and for Parkinson's disease, right? ये क्या करते हैं कि हम सबथैलेमिक न्यूक्लियस में डालते हैं, ये ब्रेन के अंदर जाते हैं. VNS जो है ये अंदर यहाँ पे ये होता है और स्टिम्युलेटर वहीं लगता है जहाँ VNS लगता है, जहाँ सारे पेसमेकर्स लगते हैं ये, एज अपोज टू RNS जो ब्रेन के अंदर ही लगा होता है. एंड ये यहाँ से इम्पल्सेस जाते हैं और सो ये 30 to 70% सीजर रिडक्शन करता है. कंप्लीट क्योर इनमें से कोई नहीं करता. ठीक है. एक और चीज़ है जो कि बहुत ही नई और बहुत ही वो है, एंड बेड साइड पे या जस्ट OR में डे सर्जरी में की जा सकती है. सरफेस इलेक्ट्रोड्स, ये सरफेस EEG है, स्टीरियोटैक्टिक EEG है. ये पेग्स, इलेक्ट्रोड पेग्स अंदर डाल देते हैं और सीजर फोकस को मैप करते हैं. जब आपको सीजर फोकस, खासकर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सीज जो बिल्कुल यहीं होती हैं या फ्रंटल या जो ऊपर होती हैं लैटरल, उसमें ना उनको मैप करते हैं. जब आप उनको मैप कर लें तो फिर उसके थ्रू हम जस्ट लेज़र की शुआएं से उस सीजर फोकस को वहीं के वहीं बेड साइड पे ख़त्म कर सकते हैं. इसकी पूरी वर्कशॉप मैंने अटेंड की है और यकीन जाने आई एम so much into के हाउ कैन आई गेट दिस हियर. दिस इज सच एन ईजी एंड इट्स अ कंप्लीट क्योर एंड दिस इज जस्ट समथिंग दैट वी नीड टू ब्रिंग हियर. एंड दैट्स हाउ लेजर से ना ये इस तरह से यू कैन सी हाउ इट गोज. I know you're all tired from that, so I won't go into the depths of that, but it really works. So, lifestyle modifications हमने कर ही ली थी, right? Sleep, triggers में, Sting कितने लोग पीते हो यहाँ पे? Red Bull कितने लोग पीते हो? हाथ उठाओ. Sting, right? These energy drinks really mess the teenage brain. And they're very bad for epilepsy patients, very bad for migraine patients. They really mess up your brain. Once you've crossed the teenage, अगर आप लोग final years में हो तो चलो you're safer as far as that's concerned. But if you have epilepsy or migraine, these are not the things you should be doing. Okay? Alcohol and substance abuse, triggers, and is it working? Oh, acha. So, toast is burning. Toast is not.
Anytime she has a seizure, she squeaks something burning. Now, if we can provoke that smell by probing the surface of the brain, we'll find the source of the seizures. Mrs. Cole, do you feel anything? I see the most wonderful lights. And now what do you feel? Did you pour cold water on my hand, Dr. Penfield? Now what? What is it, Mrs. Cole? Burnt toast. Dr. Penfield, I can smell burnt toast. Dr. Wilder Penfield. He cured my seizures and hundreds more. So this was way back. तो ये नहीं समझे कि सर्जरी आज की चीज़ है. This is way back. Jasper and Penfield, they're the two buddies जिन्होंने epilepsy में बहुत काम किया था, and it was mainly because उसकी wife और उसका बेटा. So you get triggered, you need a passion, you need an impulse and something to do that, and thank you all very much. I hope I didn't exceed too much of my time limit, but I was told to wake you up. कोई questions हो या तो नहीं? Thank you so much, Dr. Fawzia Siddiqui, for joining us today and enlightening us regarding alternative therapies of diet and newly advances regarding the surgeries. So it's time to move forward to the conclusion. Before that, I would like to thank Professor Abdul Malik. It's an honor for me to hosting this event. And now for the conclusion, to officially close this seminar or hybrid webinar, I would like to invite the chair of this session, Professor Khalid Shah, the head of Department Neurology, JPMC, and the Vice President of the Neurology. Please welcome Professor Khalid Shah for the closing remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, organizers of this webinar, especially Dr. Malik, for providing me chance to chair this session. And actually, I was sitting here and I listened to few lectures. I missed first two lectures. And we were lucky to have distinguished speakers with us. And their talks were so informative, especially for our younger generation and young kids, budding doctors. They must have generated some interest in their minds to think about neurology as their future field. So, our first talk was by Dr. Malik, Professor Malik. And you know very well that proper treatment, successful treatment depends upon exact, precise classification of seizures. So he must have told you about intricacies of new classification with focal, generalized and unclassified or unknown onset seizures. And second, our wonderful teacher, our wonderful speaker, Dr. Vase. And he always speaks about things which relate to national issues regarding epilepsy and neurological disorders. And his talk was IGAP in Pakistan and stigma in epilepsy. आपको पता है बड़ा कि intersectoral global action plan, it stands for this. And this was proposed by World Health Organization few years back. इसका मकसद ये था कि ऐसे टारगेट्स मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज़ को दिए जाएं कि दे शुड वर्क in collaboration with different sectors in their countries to promote awareness about epilepsy. तो हमेशा हमारे वासे साहब इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा लेते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ में उनका बड़ा एक्टिव रोल होता है. तो आज उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मुझे यकीन है कि उनने आप लोगों को इस बारे में बताया हो गया. आपको पता है स्टिग्मा भी तो है ना, जिन, भूत, ऐसी चीज़ें. हमारे पास मैडम
फोजिया को तो बहुत ज़्यादा, मालिक साहब को भी आइडिया होगा, यंग बच्चियाँ, उनकी मदर्स, एपिलेप्टिक बच्चियाँ, पढ़ी लिखी बच्चियाँ, उनके पेरेंट्स आके इसी डॉक्टर साहब हाउ टू हाइड दिस थिंग फ्रॉम इन लॉज, अब बच्ची की शादी होने वाली है, व्हाट टू डू, बच्ची वहाँ छुप के दवाइयाँ खा लेगी, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज दिस टू दी पीपल। और अक्सर मोर देन 50% केसेस में मैंने ये देखा है, जो स्टिग्मा है वो भी इस तरह का है कि वो लोग नहीं चाहते कि 50% ऑफ द फैमिलीज डोंट डिस्क्लोज इट टू द रिलेटिव्स के बच्ची को एपिलेप्सी है। और हमारी सोसाइटी भी इतनी एडवांस और इतनी उसमें अवेयरनेस अब तक नहीं आई, जो कि रोल है ग्लोबल एक्शन प्लान का कि ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए, हेल्थ सेक्टर के अलावा एजुकेशनिस्ट को, सोशल सोसाइटी, सिविल ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया जाए। उसके बाद हमारी सादिया निशात, शी टॉक्ड अबाउट रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी। देखें, this was very informative talk and very good. She was touching different aspects of refractory epilepsy. When adequate trial of 2 appropriately chosen and well-tolerated drugs fail, आपने एक मेडिसिन दी, प्रॉपर डोज दिया, प्रॉपरली सिलेक्ट की, देन यू वेंट फॉर add-on medicine or you went for trial of second medicine, and if 2 medicines fail, then it should be considered drug-resistant epilepsy. अब ये बड़ा कॉमन है, वी सी सो मेनी पेशेंट्स, डेटा सेज अराउंड 30 to 40% फोकल एंड जनरलाइज्ड एपिलेप्सीज मे बी ड्रग रेजिस्टेंट। तो हाउ टू ट्रीट दीज केसेस एंड देन हाउ टू गो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन दीज केसेस, जिसके बारे में मेरे ख्याल में बहुत अच्छी तरह डॉक्टर फोजिया सिद्दीकी ने हमें बताया कि इफ़ यू हैव पेशेंट विद स्पेशली फोकल ऑनसेट ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सीज, तो देयर आर ऑप्शंस फॉर दीज पीपल इवन इफ 2 ड्रग्स फेल। और उसमें सबसे बड़ा रोल था न्यूरोमॉड्यूलेशन का। रिजेक्टिव सर्जरीज, नो डाउट, बहुत से लोग आर स्केयर्ड कि हमने रिजेक्टिव सर्जरी नहीं करवानी, हमने टेम्पोरल लोबेक्टमी नहीं करवानी, हमने इस तरह की चीज़ें नहीं करवानी। लेकिन ये जो नई चीज़ है न्यूरोमॉड्यूलेशन, जिसमें आपने वेगस नर्व स्टिमुलेशन का जिक्र सुना, रिस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन के बारे में मैडम बोली, डीबीएस के बारे में बोली, दीज आर प्रॉमिसिंग एंड इमर्जिंग टेक्निक्स। उम्मीद है अपनी ज़िंदगी में शायद ये सारी टेक्निक्स हम पाकिस्तान में भी ऑपरेशनल देख पाएँ इन नेक्स्ट 10 years शायद, क्योंकि मैडम कह रही थी कि वो कुछ इस तरह की कोर्सेज भी अटेंड करके आई हैं और इस तरह के कुछ मैपिंग के मामलात भी देखें। आई थिंक AKU विल बी द फर्स्ट, आई थिंक, इन केस एनी ऑफ दैट टेक्निक इज मेड अवेलेबल टू पब्लिक इन आवर सेक्टर। तो ये वेगस नर्व स्टिमुलेशन, रेस्पॉन्सिव न्यूरो स्टिमुलेशन, कॉस्ट काउंट्स। हमारा इशू सिर्फ ये है कि कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है इस तरह के इलेक्ट्रोड्स की, वायर्स की और बैटरीज की, और फिर एक्सपर्टीज़ और फिर पोस्ट प्रोसीजर उस चीज़ को मेंटेन करना और उसको बार बार फॉलो अप विजिट्स के लिए जाना, ये सारी चीज़ें हिंड्रेंस हैं। लेकिन इट वाज वंडरफुल टॉक। शी आल्सो टोल्ड यू समथिंग अबाउट कीटोजेनिक डाइट, बच्चों में स्पेशली इट वर्क्स, और उनने पूरी स्टोरी बताई कि कीटोजेनिक डाइट हज़रत ईसा के रेफरेंस से उनने एक एग्जांपल दिया। एंड वी हैड वन टॉक फ्रॉम आवर इंटरनेशनल स्पीकर विच वाज मिस्टर मनमोहन, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी। एक आम सा कॉन्सेप्ट है, यू आर 4th year फाइनल ईयर स्टूडेंट मोस्ट ऑफ यू, लेकिन एक कॉन्सेप्ट सा है कि इट इज़ हार्मलेस फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी। लेकिन मनमोहन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इट इज़ नॉट हार्मलेस एट ऑल। इसका मसला ये है कि हम कुछ एपिलेप्सीज में तो उम्मीद दिलाते हैं, इफ़ यू रिमेन सीजर फ्री फॉर 2 or 3 years or 5 years, देन वी विल पुट यू ऑफ द मेडिकेशन एंड यू विल बी ऑल राइट इन मोस्ट केसेस। बट JME इज अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। हमें बता देना चाहिए पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स को, जी नहीं, यू विल हैव दिस सीजर प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग टाइम एंड यू विल हैव टू टेक दिस मेडिकेशन। मैं 10 साल कह देता हूँ, मैंने कहा कम से कम 10 साल तो आपको लेनी पड़ेगी, आप जब भी बंद करेंगे यू मे हैव रिकरेंट सीजर्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ बिनाइन और हार्मलेस।
ये सोच के वो डिप्रेशन में चला जाता है। और जेएमई के पेशेंट्स में डिप्रेशन और एंजाइटी जब वो ये सुनते हैं या अदरवाइज दे हैव मायोक्लोनिक जर्क्स एंड जनरलाइज्ड टॉनिक-क्लोनिक सीजर्स, तो दे गेट डिप्रेस्ड एंड दे रिमेन एंशियस मोस्ट ऑफ द टाइम। और हमेशा मैं एक सोच रहा था कि फास्टिंग और स्टारवेशन में प्रिवेंट सीजर्स, बट इन जेएमई आपको कभी भी, मैं ये कहता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर फौजिया का इनपुट इससे लूँ कि एक बच्चा रमज़ान से पहले मेरे पास आ रहा है और मुझे पता है कि फास्टिंग may help him control his seizures if he takes his medications regularly on सहरी एंड अफ्तारी, लेकिन उसको जल्दी नींद से उठाना सहरी के टाइम पे कि हाँ तुम रोज़े रख सकते हो, फिर मुझे लगता है स्पेशली जेएमई के पेशेंट और बाकी भी एपिलेप्सीज, दे में गेट ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्लिक्टिंग सा इशू आता है इन डिस्कशंस। तो आई एम अगेन थैंकफुल टू all of these distinguished speakers. They had very informative talks. We learnt a lot. Our budding doctors must have learnt a lot from these lectures. I am also thankful to organizers, administration of Liaquat Medical and Dental College and Head of Department Neurology, Liaquat Medical and Dental College, Dr. Abdul Malik. Thank you very much. Thank you. Thank you for the remarks. Now here comes the last event, prize distribution, shield distribution ceremony. So I would like to call the chairperson of this seminar again, Professor Khalid, to please come on his stage for the shield distribution. Professor Khalid, please come on the stage for the shield distribution. Along with him, I will also like to call Dr. Shahid Ahmad, co-chair of this event. Please come on stage for the shield distribution. So we have the guest speakers who came here and take time from the busy schedule. As a reward or a small token of appreciation, we are pleased to present the shield to Dr. Sadia. Please come on stage. She joined us from SIUT Karachi. Now I would like to call Dr. Fauzia Siddiqui. She joined us from please come on the stage. She is the president of Epilepsy Foundation and the consultant neurologist. Now I would like to call Professor Abdul Malik to please come on the stage and present the shield to Dr. Khalid Sher, who is the chair of our seminar. Sorry to interrupt. I want to correct you. I am Khalid Sher, son of Sher Muhammad. Sher is a caste in Sindh. I am not Sher. Khalid Sher. Last but not the least, the moderator of this session, our bright future consultant, Dr. Misam Zaidi. I request him to take his shield from Dr. Khalid Sher and Professor Dr. Shahid Ahmad.
For a group photo, I request Dr. Sadia and Dr. Fawzia to come on stage so that we have a group photo with all faculty, and Nisam will also join. Thanks a lot. Faculties is requested to come on the conference room, right? And all the students are requested to take their some snacks and some juices from outside the lecture hall. Thank you very much.